जी ठीक। बच्ची की बीमारी आपकी बीमारी में कैसे कन्वर्ट हो गई? आप नहीं, बच्ची अलग बीमा, झांसी का सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहे हैं। वो टीकमगढ़ के लोग झांसी जाते हैं इलाज। नहीं, वो तो ठीक है, जाते होंगे, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए झांसी जाते हैं। एंट्रिक फीवर का तो ब्लड टेस्ट अगर होता है तब मालूम पड़ता है टाइफाइड है। कहाँ है वो रिपोर्ट? अब माय लॉर्ड, ये 2009 का प्रकरण है। नहीं। अभी तक अब तो आगे के लिए तो आप वो हो जाएंगे, अपने पक्षकार को बोलेंगे कि पैथोलॉजी की रिपोर्ट, दवाई के बिल पर्चे सब लेकर आओ साथ में। इस तरीके सर्टिफिकेट का कोई मतलब मैंने नहीं है। बोला था, उसके पास कुछ है नहीं। कुछ है नहीं ना, ठीक है, चलिए। उसने कहा मेरे पास जो थे वो सब गुम गए। दिस पिटीशन इज फाइल्ड being aggrieved of the order dated 28/1/2009 passed by the project officer, Integrated Child Development Project Prithvipur, District Tikamgarh, whereby services of the petitioner who was working as Anganwadi Karyakarta in ward number 1 Prithvipur have been dispensed with on account of unauthorized absence. Next para. Petitioner had filed an appeal before the Collector Tikamgarh, who too wide order dated 24 October 2009, Annexure P4, rejected the appeal. Next para. Petitioner thereafter had approached this court by filing WP 12725/2009. 725 ही है ना ये? 726 है, 726/2009, which was withdrawn and with liberty to approach the commissioner in second appeal. Next para. Wide order dated 15 अक्टूबर 2012, Commissioner Sagar Division Sagar in appeal case number 392/89/2009-10 rejected the appeal, hence this petition. Next one. Learned counsel for the petitioner places reliance on decision of a division bench of this High Court at Indore bench in WA number 111 of 2018, decided on 18/2/2019, wherein Honorable Division Bench, relying on a decision of Supreme Court in Umarnath Pandey versus State of UP, AIR 2009 SC 2375, after quoting exhaustively from the said judgment, pointing out that what is the natural justice has had set aside the order of termination in that case. Next para. It has been held by Honorable Division Bench that if the Anganwadi Karyakarta was critically ill, then her services could not have been dispensed with by merely issuing a show cause notice, and failure of the appellant to submit her reply on account of critical illness. Next para. Shri Amit Mishra supports impugned orders and submits that petitioner has tried to camouflage her illness. Full stop. It is submitted that Collector Tikamgarh has categorically noted in its order dated 24 October 2009 that petitioner had filed an application showing that her child was ill, but the medical certificate which has been produced is from a medical officer at Jhansi showing that petitioner was ill. Full stop. Next paragraph. A perusal of the record reveals that in Annexure P3 there is a clear mention of the fact that a show cause notice, P3, P4, there is a clear mention of the fact that petitioner was given a show cause notice on 16/1/2009, full stop. Since nobody was available at her home, it was affixed at her house, full stop. This fact has not been denied by the petitioner. Next para. Petitioner has taken a plea that since there was a curfew obtaining in Prithvipur, therefore she could not send her applications in time. Full stop. Order of the collector reveals that
curfew was imposed on account of death of one Shri Sunil Nayak on 27/11/2008, but later on that curfew was relaxed on 15/12/2008 and 3/1/2009. Therefore, petitioner's contention that she could not send applications for her leave on account of curfew is not made out. Next paragraph. The certificate which has been produced from a medical officer at Jhansi is also does not inspire confidence in as much as it is mentioned that petitioner was suffering from enteric fever and she was advised rest for 2 years. Full stop. In the medical jurisprudence, comma, enteric fever at one go does not require 2 months rest. Full stop. Petitioner had consulted said doctor in OPD. Full stop. There are no test reports to show that on what basis doctor had detected petitioner to be suffering from enteric fever. Full stop. It is also not on record that what medicines were prescribed and they were actually procured obtained purchased by the petitioner for the said treatment. Full stop. Besides this, petitioner in her application had shown reason for her non-attending the work due to ill health of her daughter. Full stop. Thus, she was obliged to produce medical certificates of her daughter, but instead she produced her own certificate, which clearly pointed out that her claim was false, as has been noted by the collector Tikamgarh. Next para. Collector Tikamgarh has clearly mentioned that she has not mentioned as to she was suffering from which serious ailment for which she was required to remain on leave for such a long duration. Next para. Taking these facts into consideration, when the impugned order is tested, then having issued a notice on 16/1/2009, comma, petitioner having failed to file reply to the said show cause notice, comma, it cannot be said that principles of natural justice were violated. Full stop. Critical illness, as has been discussed by a honorable division bench of this High Court in Parvati Pawar versus State of MP, has no correlation with the facts of the present case, in as much as said critical illness is not corroborated by any documentary evidence. Therefore, in the present case, order of termination of the petitioner for her unauthorized absence and not being present during 2 inspections which were carried out at the Anganwadi Kendra, comma, does not call for any interference. Petition fails and is dismissed. Number 9. Yeah. May I please, Your Lordship, in this matter, I am filing the reply of the IA with due permission of this Honorable Court by today itself. Permission सुबह ले ली आपने 10:15 बजे? Permission has been sought by me. हाँ? Permission has been sought by me. ले ली सुबह 10:15 बजे. फाइल कर दीजिएगा, लिखिएगा. श्री, आपका शुभ नाम बताइए. Ravikant Agarwal. Ravikant Agarwal for the petitioner. Shri Takmil Nasir for the respondent submits that he is filing reply to किस IA का reply file कर रहे हैं आप? That is IA number 10236 of 17. Is filing reply of IA 10236/17 during the course of the day. Copy be supplied to Shri Agarwal. He may seek instructions list after 4 weeks. Highly obliged. Number 10. Lords, as per the last order, there is a direction to list this case in Part B of the cause list, Your Lordship. अच्छा. But during the pending, there was an application for final hearing at motion stage, which was filed before that order. अच्छा. So Ghosh Gomore submits that by order dated 10/1/24, this court had directed listing of this case in Part B of the cause list. This case has been inadvertently listed today. Next para. Taking these facts into consideration, comma,
it is apparent that listing has not bothered to go through the order dated 10/1/2024 and has listed this case for on IA 9688/23 वो पेंडिंग थी साहब which was filed prior to the date of order dated 10/1/2024 full stop. Accordingly, IA 9688/23 is dismissed as not pressed. List this case for final hearing in Part B of the cause list. Most obliged, Your Honor. Number 11, In this case, my lord, last date, my lord, ordered, my lord, for the same, my lord, is stated to be in the final hearing in the part 2 of cause list, from the last date of order sheet, my lord. Shri Sanjay Sarvate submits that filed order dated 1/2/24, this court had ordered for listing of this case for final hearing in Part B of the cause list. Accordingly, IA 2949/24 is dismissed as not pressed. List for final hearing in Part B of the cause list. number 12, We have received the return today. Yes. Morning, I will like to file the rejoinder. I have to go through, my lord. Shri D.K. Dikshit, learned senior advocate, assisted by Shri Anshul Dikshit, prays for time to file rejoinder to the return received by him today morning. On his request, 4 weeks' time is granted to do the needful list after 4 weeks. After 3 weeks time, my lord, thereafter, may some date be kind of, चलिए it will be listed one. आएगा. number 13, Lord, kindly see the order dated 15/2/2023, my lord. On that day, the Sano Court directed the respondents to file an affidavit 15/2/2023 के अनुसार. Last paragraph में. नोटिस ही तो इशू किया था. लास्ट में हुआ था कि फाइल में एफिडेविट लास्ट पैराग्राफ. हाँ, लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा. पढ़िए. It's notice to the respondent on payment of process fee within 7 working days registered, which the post file copy of the order by which they have actually extended the benefit of 6th and 7th pay commission recommendation in favor of the petition, failing which this court may have to issue notice for commencing the contempt of earlier order of this court. जी. क्या हुआ बताइए. I'm paying for 2 weeks time for file. क्या हो गया. Then fine. Recent 15/2/2023 से साल भर में तो आप फाइल नहीं कर पाए. जनवरी 12 जनवरी को वकीलनामा फाइल हुआ है. जिस पर क्या हुआ 12 जनवरी के बाद. तो क्या हुआ 12 जनवरी के बाद. किसी को कॉल किया था, हमारे कमेंट्स आ गए. जी. 1 से 2 हफ्ते में फाइल कर दूं. क्या हो गया. 1 हफ्ते में फाइल कर दूं. श्री स्थापक अमित अमित स्थापक तो इसमें for कि जो by way of छोटा सा, last intelligence granted 7 days time to file compliance report of the order dated 15/2/2023, failing which executive engineer O&M Madhya Pradesh Purv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited shall remain personally present. List on. नहीं, O&M division Mauganj, respondent number 4. एक मिनट रुक जाइए. Respond number 4 कर दीजिएगा. Shall remain personally present. मैंने आईए भी लगाई है List on 12 मार्च 2024. मैंने एक आईए भी लगाई अमेंडमेंट का टाइपोग्राफिकल एरर है पैराग्राफ को 5 पॉइंट. इसको हटाइएगा, सब काट दीजिएगा. लिखिएगा. श्री अजीत सिंह has filed IA 18721/23 an application for amendment
इसका रिप्लाई देना है आपको कि अलाउ करते हैं अमेंडमेंट? कॉपी नहीं मिली है। Let copy of the amendment application be supplied to Shri Amit Sthapak, appearing for the respondent number 2345. Next, let reply to the amendment application be filed within 2 weeks, list thereafter. चलिए, क्योंकि विडो लेडी में इसको क्या कर सकते हैं? आप अमेंडमेंट लगाए, आपकी गलती है, टाइम से लाना चाहिए था। करेक्ट, हमसे गलती हमने हो तो पहले ऑर्डर कर दिया। कोई पहले ही वाला ऑर्डर कर देना इसको, चलिए ठीक है, कोई डेट दे दे मेलोडी इसमें। आएगा 2 हफ्ते बाद आएगा। चलिए, Petition number 40. मान लो टर्मिनेशन का मैटर मान लो जिसमें सर अब एक 6197 और 23 सेम मैटर है, उसकी रिप्लाई हमने अडॉप्ट की साहब। आई एम प्रेइंग फॉर काइंडली लिंक एनालॉगस। list this case along with WP 6197/23, whose reply of which has been adopted in the present case by the state. डे आफ्टर टुमारो में आपको क्या लगता है कुछ काम नहीं है हमारे पास में? साहब 11 की लिस्ट है साहब, उसमें क्या कर सकते हैं? 11 के लिए दिखा रहा साहब। तो 11 तारीख को आएगा फिर, जी सर। आज क्यों आएगा? मान आदित्य व्यास कोई डेट देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। नेक्स्ट केस। Petition number 15. Your Lordship. Your Lordship, this matter also pertains to the revaluation, Your Lordship, of the MPPSC 2023, Your Lordship. जी, My Lord, recently, my Lord has passed order dated 21 of February 2024, Annexure P8, page number 66, Your Lordship. Whereby all three similar questions has been raised before that petition, Your Lordship, and my Lord has directed to allow the petitioner to fill the form for the mains examination. देखिएगा, petitioner is seeking parity with। आपके कितने नंबर आए फिल्म्स में? My Lord, इनके 154 हैं, Your Lordship. आपके 154, My Lord, sorry. My Lord, 146 हैं इनके. 146 हैं। My Lord. जनरल कैटेगरी के हैं आप? SC कैटेगरी के, My Lord. एसटी कैटेगरी के? My Lord, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया? 150, My Lord. 150। My Lord. तो अगर ये तीनों क्वेश्चन का भी एक एक नंबर मिल जाएगा तो भी आपके 150 नहीं होंगे। My Lord, इसमें दो मार्क्स का है, My Lord. 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. 2 मार्क्स का है, ठीक है। 6 नंबर मिल जाएंगे तो आप पार हो जाएंगे। My Lord, My Lord. ठीक है, लिखिए, फ्रेम ऑर्डर कर दीजिएगा 21/2/2024 वाला एनेक्चर P8, ठीक है। My Lord, may I make a humble submission, My Lord? हाँ My Lord, may I make a humble submission, My Lord? My Lord, kindly refer to page number 67, My Lord. हाँ My Lord has observed in that order, Lordship, हाँ, that PSC is directed to accept the form of the petition and वही this तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? My Lord, may I? This court, after hearing PSC tomorrow, may order for extension of the date so as to same inconvenience to several other candidates who are not represented before this court. जी। My Lord, the difficulty is, My Lord, there are many candidates, Your Lordship, who are also waiting for this, who are also agreed by these questions, Your Lordship, but they cannot इसमें come. कब लगा कब है वो? My Lord, 11 तारीख से मेंस के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ, My Lord. और नहीं, ये मुकदमा कब लगा ये हुआ? 12 तारीख को, My Lord, 12 क्या मार्च, कर सकते हैं? My Lord. आपकी कंसेंट तो दोनों को प्रीपोन कर लेते हैं, 7 तारीख को सुन लेते हैं। My Lord, there is a personal presence therefore तो बुला लीजिए ना, 7 तारीख को बुला लीजिए। that would be a bit difficult. हाँ, It's because अब 11 तारीख को पर्चा शुरू हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आपका बुलाकर? 7 तारीख को बुला लीजिए, उसको डेट प्रीपोन कर देते हैं। my Lord, may keep it passed around. पासवर्ड में आ जाइए पूछ के, 6-7 जो आपको सुविधा हो वो डेट रख देंगे आपकी। My Lord. क्योंकि प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि आपका एक्सपर्ट जो है, कितने एक्सपर्ट है। सवाल पूछते हैं विलियम बेंटिक का, किताब में लिखा हुआ है मेटकाफ का, और आप बोलते हैं सवाल में पढ़ा जाए मेटकाफ को। यही लिखा था ना आपने? इतने होशियार हैं आपके एक्सपर्ट। फिर आपने क्यों महाजन साहब की किताब लगाई थी? आपका एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन, नाउ यू कैन नॉट रिगल आउट ऑफ इट। योर एक्सपर्ट एनक्लोज्ड बुक ऑफ मिस्टर महाजन, ठीक है, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मेटकाफ ने 1835 में प्रेस का लिबरलाइजेशन किया।
on the next page, it was also written that वो तो there was an overlapping period because they both were in 1935. My lord, even the I, question is wrong. If both were in 1835 है. आपने पीएससी का इम्तिहान कभी दिया नहीं लगता है, हैं? my lord, even I have filed the text which has been received from the NCRT. हाँ बताइएगा एनेक्शन पेज नंबर. My lord, that is Annexure P7, Your Lordship. That relevant page at page 55, Your Lordship. That is the document which I have. 59 is the relevant part, Your Lordship. My lord, that is page 59. On the last, my lord, there is a chart, Your Lordship. First, there is a name of Lord William Bentinck has been given, and his tenure has been given. Abolition of press restrictions दिया तो है. My lord. चार्ल्स मेटकाफ. My lord, my lord. वही उसमें महाजन की किताब में दिया हुआ है. My lord, my lord. आपके काम का तो सिर्फ एक ही है पीएससी के काम का, इसमें सेपरेशन ऑफ द ठग्स ओवर हेरिडिटरी रॉबर्स. ठीक है, ले आइएगा. 6 या 7 तारीख पूछ लीजिएगा. Hello, guys. Same my lord. Same letter listed on 13 serial number 39. 39 को भी पास ओवर में रख लीजिएगा. आपके कितने नंबर आए थे प्रीलिम्स में? 156 my lord. और 4 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं इसमें. 3 क्वेश्चन. और जनरल के लिए कट ऑफ क्या था? 162 हैं? 162 my lord. 156 आए थे और 162 कट ऑफ था. Yes my lord. ठीक है, चलिए. 4 क्वेश्चन इसमें 4 नहीं, डिस्प्यूटेड. 3. There are more questions that the petition 39 has challenged. अच्छा. There are different questions. Apart from these 3, there are other questions also. This petition. 158 कट ऑफ है my lord. हैं? 158. जनरल का? Yes my lord. इसमें 2 कैटेगरीज बनी है, एक पार्ट ए और पार्ट बी की. तो पार्ट ए में 162 है अनरिजर्व के कट ऑफ, और मतलब पार्ट बी में 158. ये कौन सी कैटेगरी में? पार्ट ए में, पार्ट बी में? एक्चुअली ओबीसी के ओबीसी वाला जो रिजर्वेशन वाला इशू पेंडिंग है, उसके बाद मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने 87-13-13 का एक फॉर्मूला उसमें अप्लाई किया है. तो उसमें 13% ओबीसी के कैंडिडेट्स और 13% अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स का होल्ड करके 87% पे रिजल्ट निकाला जा रहा है मानो. तो क्यों पार्ट ऐसा क्यों? मानो इसमें कुछ क्या ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया क्या 27%? नो अलॉटशिप 87% उस पे स्टे लगा है इसलिए. हाँ, 13% का कहाँ डिस्प्यूट है? It's because there's a stay. भाई जब इंदिरा जयसिंह जो है, इंदिरा शानी इज वेरी क्लियर दैट देयर कैन नॉट बी एनी रिजर्वेशन. अब तो डीबी का जजमेंट आ गया ना. उसके बाद हाउ कैन यू अप्लाई दैट फॉर्मूला? 27 में 14 घटा दें तो 13 वो तो 13 डिस्प्यूटेड कैसे हो जाएगा भाई? है ना ऑनरेबल डिवीजन में से. डिवीजन में से स्टे कहाँ? तो फैसला आ गया ना, जजमेंट नहीं आया अभी. नो अलॉटशिप मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन पेंडिंग है, इसलिए यहाँ चलिए ठीक है, देखेंगे. पास ओवर में बता दीजिए कब आ रहे हैं आपके. ठीक है. Argued counsel not well after 2 weeks. चलिए, आपका शुभ नाम बताइए. Mahesh Kumar. Mahesh Kumar submits that arguing counsel Ashwardhan Singh Rajput is not well and therefore prays for time. On his request, cases adjourned. कितना समय चाहिए आपको? 2 weeks, my lord. List after 2 weeks. None for the petitioner. Case is adjourned. List after 4 weeks. Number 18. जी. लॉर्डशिप प्लीज नेक्स्ट वीक सर. नेक्स्ट वीक क्या होता है भाई वकील साहब? Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 6 weeks. चलिए, इनका नाम डाल दीजिए. आपका नाम बताइएगा. आशीष चौधरी सर. आशीष चौधरी.
My lord, senior counsel out of station. तो फिर Adjournment is कहाँ है एडजस्टमेंट उनका? कहाँ है एडजस्टमेंट? ऐसा नहीं होता वकील साहब, बहस करिए। my lord, मेरे पास फाइल अभी है नहीं। चलिए लिखिएगा। श्री शुभ नाम रविकांत अग्रवाल। रविकांत अग्रवाल submits that arguing counsel is out station. Full stop. When he is requested to assist the court, he submits that he is not having the file. Full stop. It's a serious matter. There is no adjustment of any counsel. Full stop. कौन है आपके सीनियर काउंसिल? श्री स्वप्निल खरे। श्री स्वप्निल खरे is not a designated senior. Next. Case is adjourned. List after 6 weeks. Number 20. It is made clear that pendency of the petition will not come in the way of execution of the award order dated 19/10/2023. Next case. Or the order or the award dated 31/10/2022. ये बताइए। My lordship, I pray for the withdrawal of this petition, lordship, Shri Vivek Bade with liberty to raise the ground in appeal. prays for withdrawal of this petition with liberty to raise this ground in appeal. Accordingly, petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. Number 21. Yeah. Lord, I am the caveator for number 1 and praying a big stamp for filing. Shri D.K. Dikshit, learned senior Lord, advocate assisted Till by then, my lord, the order may kindly be stated. क्या है क्या ऑर्डर है? My lord, I will dealt with this get matter years of salary in for 2 December. years if the petition is dismissed. I have retired in 2008. At that time, the age of superannuation was, according to the society, 58. I have claimed that the age of superannuation was 60 only. This person has retired in 2008. जी तो किसके My lord heard this matter. I mean, in December itself. जी फिर क्या हो गया? My lord have remanded the matter. हैं? Remanded the matter to the tribunal to decide the matter afresh. जी Now, my lord, this impute order has been issued. They say, my lord, the central rules are applicable and therefore the age of retirement is 60 years. How it is possible, my lord? Society registered under the... Like that, my lord. What we have submitted that the society has passed the resolution. ठीक है, सो सुनेंगे, आपकी वेट का जवाब दे दीजिए, लिखिएगा। श्री D.K. Dikshit, learned senior advocate, assisted by Shri Anshul Dikshit, for the petitioner, Shri Tiwari, Ashok Kumar Tiwari, for the caveator, prays for and is granted 2 weeks time to file reply to the petition. List after 2 weeks. Always. My lord, in the meanwhile, the order may kindly be stated. क्या My lord, we'll have to pay, my lord, this society कहाँ से लाएगी पैसा, my lord, इतना? That much, my lord, may kindly. ये देखेंगे। My lord, the reserve execution is already pending. It is going on. ठीक है, देखेंगे इसको, चलिए। My lord, I have a next document. जी। The registrar has issued. My lord, deputy post is vacant. Deputy registrar की post vacant है 2 महीने से। चलिए, ठीक है। उससे क्या होगा? देखेंगे 2 हफ्ते बाद देखेंगे जवाब। What does it mean? चलिए, नेक्स्ट केस। Number 22. My lord, on stand admission both, my lord. हाँ, ठीक है। Reply Next week. for reply to stay application as well as the writ petition. चलिए, miscellaneous petition. Lordship, I am not challenging any Petitioner's particular only order, contention but is that the execution proceedings are pending before the Court of Civil Judge Class 2, 8th Civil Judge Class 2, Jabalpur, in civil suit number 13A/2014, which was decreed on 19/5/2017. Full stop. Appeal which was filed by the plaintiff and the defendants was registered as civil appeal number 97/2017 and same was dismissed on 25/9/2019 against said judgment and decree dated 25/9/2019. Second appeal 3392/19
was filed which has been dismissed on 16/12/2022. Thus, no proceedings are pending before the court of competent jurisdiction, and therefore a prayer is made to direct the trial court to decide the execution case number 76A/2021 expeditiously. This innocuous prayer can be granted 3 months time करके. This court has not expressed any opinion on the merits. चलिए. Case number 23. Whereas the plaintiff petitioner filed a suit seeking a decree for a specific purpose in a contract of sale. The defendant denied the execution of the agreement of sale in favor of the plaintiff petitioner. During the stage of evidence, I filed a certified original copy of the registered sale deed. And in a cross-examination of the defendant, I asked them the question whether you have executed this document. So they say they admitted their signature and execution of that sale deed. So I filed application under section 45 of the Evidence Act and prayed that there is available admitted signature of the defendant. Therefore, plaintiff is permitted to obtain expert opinion of the Expert opinion की कहाँ जरूरत है? जब उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट की है, उसका एक्सपर्ट ओपिनियन किस चीज के लिए? सेल डीड को सिग्नेचर से हम अपने एग्रीमेंट ऑफ सेल की मिलान अरे भाई, एग्रीमेंट का तो आपको प्रूव करना है जी. एग्रीमेंट आपका कहना है, उसमें 45 की एप्लीकेशन कहाँ से लगेगी? 45 इसलिए सर हमने. अरे भाई, एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सेल. ठीक है, they may have denied. जी. तो वो सेल डीड में जो उनके एडमिटेड सिग्नेचर है जी, वो हमने कहा कि देयर इज एडमिटेड सिग्नेचर ऑफ द डिफेंडेंट, दे एडमिटेड इन देयर एविडेंस. डिफेंडेंट क्या करता है? कौन सर? डिफेंडेंट सर बहुत सारे हैं. अरे जिसके साथ ये बिजनेस करते हैं सर. हैं? कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ सर्विस करते हैं, कुछ खेती करते हैं, सब अलग अलग. तो बाकी तो वो है जिनको एक सेकंड. ये 2002 का आपका अनुबंध 2011 का है जी. 2002 में आप ही के पक्ष में सेल डीड हुई है जी. उसके तो फिर आपने अपनी साक्ष्य में क्यों नहीं उस सेल डीड के बारे में कहा? सेल डीड पे तो अरे हमने तो कहा है, उनसे भी पूछा है तो एडमिट किया. तो फिर तभी क्यों नहीं आपने आवेदन लगाया था 45 का? तभी आपको कहना चाहिए था कि भाई हमारी साक्ष्य में ये बात आ गई है कि 2002 की सेल डीड उन्होंने हमारे पक्ष में की थी, उस पर प्रमाणित हस्ताक्षर है. तो हमारा डॉक्यूमेंट है दैट यू हैव एग्जिबिटेड. बट व्हाट डिफेंडेंट आज एडमिट कर लिया. जब आज फाइनल हियरिंग पे केस लगा है तब 45 का आवेदन लगाने का क्या उचित है? एविडेंस के बाद हमने लगाई एप्लीकेशन. सॉरी, व्हेन दे एडमिटेड योर लॉर्डशिप हैड did you confront the witness? आपने तो 2002 का जो सेल डीड थी उसको अपने गवाहों से, जो कि उसके
अनुप्रमाणित गवाह थे उनसे प्रूव करा लिया था 2002 का दस्तावेज पेश के? उनके गवाहों से नहीं कराया था। अच्छा, हमने सर प्रूफ पेश किया था कि ये सैलरी उन्होंने एग्जीक्यूट की थी। हाँ हाँ हाँ। एग्रीमेंट के गवाहों से कराया। किसकी किसकी साक्ष्य में आया ये डिफेंडेंट की साक्ष्य में। कहाँ है डिफेंडेंट की साक्ष्य पर? ठीक है सर, मैंने कॉपी फाइल की है उसकी, हाँ। एविडेंस की। जी, ये है सर, एनेक्टर P5 सर। पढ़िए P5 पढ़िए P5 सर पढ़िए। ये है सर। पैरा 10 सर। पैरा 10 पढ़िए। प्रदर्श P1 के प्रश्न क्रमांक 2 पर C से C भाग पर हस्ताक्षर दिखाकर साक्षी से पूछे, साक्षी ने कहा उक्त हस्ताक्षर उसके नहीं, यह कहना गलत। हम लोग प्रदर्श P1 के प्रश्न 2 पर C और साक्षी से पूछने पर साक्षी ने कहा कि उस हस्ताक्षर उसके नहीं है। हाँ, ये एग्रीमेंट के बारे में बोल रहा है। हाँ हाँ। और सेल डीड के बारे में ये है सर। सॉरी, और हमने क्या अलाउ किया है? उसने एडमिट किया, सिग्नेचर एडमिट किया है उससे। कहाँ एडमिट किए हैं? Yes, sir. वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। ये पैरा 12 सर। पैरा 12 पढ़िए। यह कहना चाहिए कि मैंने मेरी माँ इंदुबाई ने एवं मेरे दोनों भाइयों ने प्रदर्श P17 के विक्रय पत्र के जरिए। अभी तो ऊपर P1 की बात हो रही थी। P1 एग्रीमेंट ऑफ सेल है सर, एग्रीमेंट ऑफ सेल। P17 है वो सेल डीड। जी, P17 ये तो आपका डॉक्यूमेंट है ना? P तो आपका डॉक्यूमेंट है। P1 एग्रीमेंट ऑफ सेल है। हाँ, P17 ये तो आपके, अरे भाई वकील साहब आप बात समझिए, आपके बोलने से नहीं हो जाएगा। P17 आपका दस्तावेज है। P17 में आपको मालूम था कि इसमें जो है प्रतिवादी के हस्ताक्षर है, उसने सेल डीड की थी 2002 में आपके पक्ष में। आपने तभी आवेदन क्यों नहीं लगाया कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल है इसके हस्ताक्षर की P2 के हस्ताक्षर से जांच कराई जाए? वो जब एडमिट कर लेंगे तब लगाएंगे। ऐसा थोड़ा ना उसको एडमिशन सिग्नेचर को सर उन्होंने जब उनके एविडेंस P17 जब आपने एग्जिबिट कर दिया, से मेरे हस्ताक्षर P17 पंजीयक के सामने काली से अंकित अंगूठा भी लगवाया गया था। अंगूठा का भी मिलान कैसे होता सर? जब उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमारे अंगूठा है, तब हमने एप्लीकेशन लगाई सर। हम पहले लगाते तो डिनाई भी कर सकते थे। नहीं क्या डिनाई कर देते? अरे भाई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की सभी को मालूम है सेंटिटी, ऐसा हो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तोड़ना। एडमिशन आने के बाद उसको एडमिटेड सिग्नेचर मारिए। ये लाट से अलाउ वाला आपकी पिटीशन। कौन सी एप्लीकेशन अलाउ करी बताइएगा? पिटीशन आपने अलाउ की थी। कौन सी? कहाँ है वो उसका ऑर्डर? दूसरे केस में क्या अलाउ किया बताइए। कल से क्या होगा? लिखाना तो अभी है सर। सॉरी सर, हम लाए नहीं हुए। इसी केस में नहीं, दूसरे केस में। दूसरे केस में वो भी, इसमें भी हमने एप्लीकेशन एट द स्टेज ऑफ फाइनल आर्गुमेंट लगाए थे। फैक्ट्स अलग रहे होंगे। यहाँ तो आपके पास दस्तावेज अलग रहेंगे। दस्तावेज तो ऑलरेडी लिखिएगा, कुछ है नहीं। सॉरी, दिस पिटीशन इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5/2/2024 annexure P8 passed by learned this 5th District Judge Jabalpur in civil suit number 12A/2012 rejecting an application under section 45 of the Evidence Act for getting the signatures of the defendant number 3 and 4 matched with the agreement to sale, which is the bone of contention and for specific performance of which suit has been filed by the plaintiff. Sir, you are permitted to withdraw the petition to raise the. तो अभी इतना लिख दें, उसके बाद में कर देते हैं नेक्स्ट पैरा. Learned counsel for the petitioner, after arguing at length and pointing out that this application should have been allowed when confronted with the fact that Exhibit P17 is the document executed in the year 2002. It was exhibited by the plaintiff. If plaintiff was in possession of an admitted document, namely a sale deed which was executed by the defendant number 3 and 4 in the year 2002,
then why he had not moved an appropriate application for examination of and verification of signatures of defendant number 3 and 4 on the agreement to sale which was executed in the year 2011. 2011 का है ना? 2011 with the signatures which were existing in the year 2000 which were existing on a registered document since 2002. Praise for withdrawal of this petition with liberty to raise issues before the appellate court. Petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. Number 24. My lord, petitioner is Panchayat Secretary, my lord. Some complaint was made against the petitioner, my lord, and inquiry behind the back conducted by the respondent number 3, my lord. And suspended the petitioner from the post of Panchayat Secretary, my lord. उसकी अपील होती है, अपील कर अपील तो हमने की है साहब, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस विदाउट सो काज नोटिस। अपील में बताइएगा ना, अपील दो रेमेडी कैसे होंगी? आपने अपील भी कर, तो जाके अपील को परस्यू करिए, लिखिएगा। P2 है हमारी अपील। Petitioner has already filed an appeal against the order of suspension to the Commissioner Schedule Division Schedule. He prays for withdrawal of this. No, petition. I am withdrawing it. अच्छा ठीक है, तो हम मेरिट पे लिखवा देते हैं, लिखिएगा। नहीं साहब, ये नहीं कह रहे, हमारा ये P2 है जो अपील हमने करी, वही डिसाइड की विड्रॉल का। तो वही तो हम कह रहे थे, आप अपनी मर्जी से बीच में सॉरी उसके लिए चलेगा। Appeal petitioner prays for withdrawal of this appeal with liberty to pursue his appeal which is filed before the Commissioner Schedule Division Schedule. Full stop. If petitioner files a representation, then his pending appeal as contained in annexure P2 which was filed on 15/2/2024 be decided by the concerned commissioner on its own merits within 30 days of receipt of certified copy of the order. This court has not observed any. This court has not dealt with the merits of the case. Next case. Annexure P3 representation. Petitioner has made a representation to the collector Anuppur in regard to payment of salary. Full stop. 15 दिन 60 दिन. This court has not expressed any opinion on the merits. My lord, petitioner retired from service on 30th June 22, my lord. His claim has not been settled by the authority. My lord, the retirement dues as well as the benefit of third time scale is pending before the authority. My lord, may I appreciate annexure P8 page 34. The matter page तो ही नहीं, page 7 तक ही लगाया आपने। P8 कहीं नया लगा क्या? Page 34 है सर। 34 नहीं, पेज एनेक्चर आप P8 बोल रहे हैं, P8 तो कोई एनेक्चर है ही नहीं। तो सर पेज फिर लगता है कंटिन्यूएशन है। That is my lord letter dated 1/5/23 my lord. जी। This is the my lord some communication of DPI to my lord. ठीक है, वही डिसाइड करने के लिए बोलते हैं इनको क्लेम आपका। सर उतना कर दें और एक टाइम बाउंड सर वो कर दें। Because वही कर रहे थे। जी सर। Petitioner's contention is that petitioner who attained age of superannuation in 2022 from the school education department has not been paid his retirement dues nor he has been extended benefit of third time scale of pay. Full stop. This petition can be disposed of with a direction to respondent number 2 to look into the grievance of the petitioner. ये राज्य शिक्षा केंद्र को क्यों बना लिया पार्टी आपने? जी सर, इनकी तरफ से कुछ डेपुटेशन में वहां भी रही राज्य शिक्षा। Respondent number 2 to look into the grievance. जब हम रिटायर हुए then at that time I was my lord under deputation. Retirement dues of the petitioner if there is no departmental inquiry pending within 30 days from the date of receipt of certified copy. Full stop. Respondent number 2 shall also take a decision in regard to extension of third time scale of pay in terms of the communication which was made by the Additional Director Public Instructions Bhopal to the Divisional Joint Director Public Instructions Sagar. Full stop. The aforesaid decision in regard to aforesaid grievance be also taken within 30 days
through a speaking order and communicated to the petitioner. Full stop. It is made clear that if the retirement dues, if a representation in regard to retirement dues is not decided within 30 days, then respondents may be personally made liable to pay interest on the delayed period of settlement of retirement dues. Case number 27. P5 and P6 are under challenge on the ground, my lord, that the administrator has no power to suspend. And secondly, when the administrator himself is the, my lord, person who has issued the check, he cannot conduct inquiry or anything against me, my lord. क्या हो गया? My lord, P3 is the show cause notice issued to me by page 15, my lord. क्या है show cause notice? My lord, that this checks has been drawn up in the society. This was issued by Prasashak, my lord, Nilesh Pandey. Now he himself is the signatory of check. I file a reply P4, my lord, that you yourself have issued the check. You have cancelled the check. I have nothing to do with this. And thereafter, my lord, he suspend me, observing that no proper reply has been given. कहाँ है checks कहाँ है बताइएगा जिन पे इनके My lord, I have also mentioned that you have not given the copy. Only one copy has been given to me, my lord. जब आप ये कह रहे हैं कि चेक पे इनके हस्ताक्षर थे तो आपने चेक देखे है? हाँ, एक P2 हमने लगाया सर. P2 बताइएगा. Petitioner's contention is that annexure P2 carries signatures of SHRI Nilesh Pandey, who has placed petitioner under suspension for misappropriation of the aforesaid check and other checks. Full stop. Issue notice. Notice is waived by Shri VIVEK Sharma, who will seek instructions from Shri Nilesh Pandey, Cooperative Inspector and Administrator, Bahuddeshi Prathmik Krishi Sak Sehkari Maryadit Govindgarh Rewa, and file his affidavit in this regard that when he himself is a party to the controversy, then how can he issue an order of suspension? List on 13 March 2024. Oblige. Case number 28. This is a petition whereby petitioner is challenging a transfer order, Your Lordship. The petitioner is a contractual employee. In the year 2022, he has joined from Bhopal to Narsinghpur, Your Lordship. And thereafter, now he has been transferred to Vidisha, Your Lordship. Why the petitioner has been transferred, Your Lordship? Because he has made a complaint against the private respondent person who have done some anomaly in the project, Your Lordship. Why transfer order? Your Lordship is at page number 32, annexure P5. P5. Yes. कंप्लेंट कहाँ है जो आपने की थी? यस योर लॉर्डशिप, वो मेरी आईए के साथ पेश की है योर लॉर्डशिप 28/2 को. आईए नंबर 3021 योर लॉर्डशिप. बताइएगा. पेज नंबर 37, डॉक्यूमेंट D1 योर लॉर्डशिप. जी क्या लिखा है? सेकंड पैराग्राफ इस स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वाटरशेड समिति बंदरोहा में 3 गोबियन संरचना जो कि बिना प्रशासकीय स्वीकृति के बहुत ही निम्न गुणवत्ता के पूर्ण करा लिए गए हैं, जो कि वस्तु स्थल पर मौजूद हैं, एवं विकासखंड परियोजना समन्वयक द प्राइवेट रेस्पोंडेंट ओपीयंत्री द्वारा मौखिक तौर पर अवगत कराया गया कि शेष कबियन संरचना कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है. मौके स्थल पर मौखिक तौर पर संबंधित विकासखंड परियोजना को निर्देशित किया गया कि कार्य किए जाने के पश्चात कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिए जाने हेतु शासन के निर्देश नहीं है. फिर भी विकासखंड परियोजना समन्वयक उपयंत्री द्वारा गोबियन की प्रशासकीय स्वीकृति कराने हेतु निवेदन किया गया. Thereafter a note sheet has been issued, your lordship. Petitioner's contention is that petitioner is a victim of bringing irregularities in the work at Narsinghpur to the notice of the authorities, as is evident from his communication dated 22/11/2023 given to the Chief Executive Officer Jila Panchayat Narsinghpur, informing him that the work of Watershed Samiti Bandroha, where 3 gabion structures were erected without administrative sanction, and that too of a low quality, and thereafter the insistence was to have a post-work sanction which is contrary to the
circular of the Panchayat and Gramin Vikas Department, Rajiv Gandhi Jal Grahan Kshetra Prabandhan Mission Bhopal, bearing date of 24/1/2023, with a view to cover up the lapses in the work of the executive sub-engineer, which were brought to the notice of the authorities. Petitioner has been transferred wide order dated 3/12/2024. 3/12 कैसे 3/2 31/2/2024 21 है वो, हाँ 21st 21/2/2024, full stop. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, operation of the impugned order as far as petitioner is concerned shall remain stayed. Petitioner will be allowed to perform his duties at Narsinghpur till next date of. Well, the person coming in his place has not been made party in this petition. I have made Lakshmikant Bharati. Lakshmikant Bharati is the present petitioner and Ramnath Chandele, respondent number 4. बने तो हैं रामनाथ जी Sir. जी। आप तो इस साल सभी कुछ राम भरोसे करना चाहते हैं। नहीं सर, नाम नहीं, सब कुछ राम भरोसे नहीं होगा ना। I am grateful. Number 29. In this case, my lord, the order of termination of the petition is under challenge, primarily on the count, my lord, that this is not the reason for which he has been terminated. There is some other reason. Yes, a show cause notice was served to him saying so that he remained unauthorizedly absent. अपील नहीं होती वकील साहब। Appeal, sir, ये authority वो नहीं है. Under the rules, it should have been the Zilla or Janpad Panchayat, as the case may be. But here the principal has, under the dictates of the district education officer, has terminated my services. अच्छा। सर ये देखें, P1 देखें, उससे क्लियर हो जाएगा. बेसिक रीजन तो यही है, बाकी उन्होंने कॉन्कॉर्ड किया है. अरे आप तो अतिथि शिक्षक हैं जी, अच्छा अतिथि शिक्षक है, हम तो समझ रहे संविदाशाला शिक्षक है। संविदा ही है सर, पढ़िएगा ना P1 की हेडलाइन पढ़िएगा। जी, दिनेश कुमार यादव अतिथि शिक्षक लिख रहे हैं वो। आप अतिथि नहीं है। अतिथि शिक्षक वर्ग 1। अरे भाई वर्ग 1 का काम कर रहे हैं इसलिए आप वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक हो गए। अगर पैनल लॉयर डीबी में काम करेगा तो वो पैनल लॉयर डीबी हो जाएगा, वो पैनल लॉयर फुल बेंच में काम करेगा, रहेगा तो पैनल लॉयर ही ना। So this is not the reason. They say that I have been working against an MLA of a ruling party. Hence his services should be terminated. Now, Marat mein just see the show cause notice is issued on. इसकी एक से रुक जाइएगा। इसकी जांच कहाँ हुई? Show cause notices are there, my lord. The inquiry report is जी there. Show cause notices are there, my lord. कहाँ है नोटिस? शो कॉज नोटिस पेज 38 पे है सर। पेज 38 पे वो कहता है henceforth आपको चेतावनी दी जाती है कि ऐसा ना करें, और एक दिन के बाद ही हमें टर्मिनेट कर दिया। कहाँ पेज 38 पे देखेंगे। एनेक्चर 6 है सर। पढ़े। उपरोक्त विसंगत लेख है कि दिनांक 17/1/24 से 19/1/24 तक लगातार बिना किसी पूर्व सूचना के संस्था से अनुपस्थित रहे आय का उत्कृष्ट मध्य प्रदेश आपका उत्कृष्ट मध्य प्रदेश कर्मचारी आचरण नियम आय दिखाई देती है। वो आप सर वो टाइप से पढ़ रहा था सर। आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमों के प्रतिकूल होकर कदाचारण की श्रेणी में आता है, अतः अधिकांश संस्था पे विलंब से उपस्थित होते हैं और हस्ताक्षर कर निर्धारित समय से पहले ही संस्था छोड़ कर चले जाते हैं। आपका यह रवैया शैक्षणिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा नजदीक है, फिर भी आपके द्वारा शैक्षणिक कार्यों में लगातार लापरवाही की जा रही है। शैक्षणिक कार्यों में लगातार लापरवाही की जा रही है एवं शासन के नियम एवं आदेशों को जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। पूर्व में आपको कई बार चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं एवं मौखिक रूप से हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एवं चेताया गया है, परंतु आपके द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है। यह अंतिम चेतावनी है, पत्र है। इसके बाद लापरवाही शैक्षणिक कार्य में पाए जाने पर बिना किसी पूर्व अब तो आपके यहाँ सब वो लग गया ना, आजकल तो उसके खिलाफ क्या बोलते मोबाइल फोन से आपकी अटेंडेंस होती है। जब हम जहाँ ग्वालियर में जस्ट थे तो सारे स्कूलों में तो वो मोबाइल वाली अटेंडेंस हो गई थी। तो फिर ये लगा तो वो मोबाइल अटेंडेंस का रिकॉर्ड कहाँ है जिससे मालूम पड़े देर से आते हैं जल्दी चले जाते हैं। नहीं, इसमें भी सर ये लिखते हैं कि हम इस henceforth हम आपको कर देंगे और एक दिन का समय दिया। अरे रुक तो जाइए, रुक जाइए।
आपने जो चीज नहीं लाई वो हम पूछना चाह रहे हैं। जी सर। आपको तो वो लेके आना चाहिए था। आप लोग क्या है ना, इंडस्ट्री मोड में आजकल मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। सर वो तो नहीं बता सकता मुद्दे सर, की लेकिन बात तो यही, अरे हमें मालूम है ना कि आजकल मोबाइल के ऊपर अटेंडेंस दर्ज की जाती है, ई अटेंडेंस दर्ज होती है स्कूलों में, तो वो रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं स्कूल का कि आपका ये जो कंटेंशन है कि ये लेट आते हैं जल्दी चले जाते हैं, वो ई अटेंडेंस शीट होगी ना आपके पास में। जी। आपको तो ज्ञान होगा ना कि आजकल स्कूलों में ई अटेंडेंस हो रही है अध्यापकों की, है? जी। आपके एजी ऑफिस में भी होती है शायद ई अटेंडेंस, है सर? बीच में आने आने की छूट रहती है। I was not aware of that, sir. I was not aware. तो इसीलिए तो आपको बता रहे हैं, तो मंगा लेते ना। इशू notice is waived by Shri VIVEK Sharma, learned Deputy Advocate General. He is directed to produce on record copy of the e-attendance sheet to substantiate the allegations made by the principal Sankul Pracharya, Government Higher Secondary School, Bamori Kala, Development Block, Ajaygarh District, Panna, that petitioner was not reporting in the school in time and was going back and leaving the school early. Full stop. Let record of the e-attendance be brought on the list next week. But ये जो his concern file regarding this, because I say that it is because of an undue influence by the MLA. P1 is the order. वो भी lying. In the meanwhile, आपका तो वकालतनामा ही नहीं है इस केस में। मैंने पेश कर दिया सर कल शाम को। Actually, Kabir suggested it was an urgent matter. That would amount to final relief claimed in this petition. नहीं, हम तो सिर्फ रिकॉर्ड मंगाने की बात। रिकॉर्ड देख लेंगे ना, उसमें एक बार उससे ही क्लियर हो जाएगा। Petitioner's contention is that he is being I filed my वकालतनामा on account of undue influence of local MLA. Let file in which case of the termination of the petitioner has been dealt with be also produced before next date. Chaliye. I'm so much obliged. May it please Lordship. Lordship, by way of this petition, I am challenging the order annexure P3, my lord, by which an application of the plaintiff filed under order 9, rule 9 was allowed, my lord. My lord, आप डिपेंडेंट हैं। I'm the defendant, my lord. क्या कह के अलाउ कर दी? My lord, without assigning any reason, my lord, and the reasons which चलिए application तो पढ़ लें पहले। My lord, may kindly see annexure P3 is the application, my lord. Page number 99, my lord. May I read, my lord, from para number 2, my lord. एक ही माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण पूर्व दिनांक में आदेश 23 नियम 3 सैपटित धारा 151 सीपीसी का आवेदन उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कर राजीनामा कथन हेतु नियत रहा है तथा दिनांक 1/10/22 को प्रकरण अग्रिम कार्रवाई हेतु दिनांक 13/10 को नियत किया गया। यह कि दिनांक 13/10/22 को वादी आवेदक के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा प्रकरण अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत होने के कारण उक्त दिनांक को प्रकरण शाम में वादी अधिवक्ता द्वारा श्रीमती संगीता के पति एडवोकेट सुशील कुमार यादव को फोन कर प्रकरण में नियत तिथि की जानकारी के संबंध में न्यायालय जाकर लेने हेतु कथन 23/3 का आवेदन पे लगा हुआ था ऑलरेडी। मैटर तो वैसे ही कंप्रोमाइज हो रहा है। चलिए ऑर्डर कहाँ है कोर्ट का? मतलब 23/3 पे कथन के लिए लगा था एंड इन वन ऑफ द ऑर्डर शीट वी हैव स्टेटेड दैट वो कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट नहीं हुआ फॉर द रीजन नहीं हुआ तो सूट चलने दीजिए। मतलब व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज द रीजंस व्हिच वर असाइंड बिकॉज़ एज पर द प्रोविजंस द ऑर्डर वेयर इज द ऑर्डर my lord 28/11/23 my lord at page number 104 my lord 105 onward 105 my lord the reasons which were assigned my lord are at page number 107 जी। मूल सिविल प्रकरण क्रमांक 49/2015 के अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 13/10/22 को प्रकरण अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत था, किंतु चायकाल पश्चात 5 बजे लगभग वादी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण आदेश 17 नियम 2 सैपटित आदेश 9 नियम 8 के अधीन खारिज किया गया था, जिसके खारिजी को अपास करने के निवेदन के आशय से आवेदक द्वारा यह विविध प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा नियत पेशी दिनांक 13/10/22 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाने का कारण यह बताया है कि उक्त दिनांक को आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित हुए तथा प्रकरण अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत होने के कारण फोन के माध्यम से
साथ ही अधिवक्ता सुशील कुमार यादव से उक्त प्रकरण में नियत तिथि की जानकारी न्यायालय से जाकर लेने हेतु कथन किए तो प्रकरण न्यायालय के द्वारा रखा हुआ था। तत्संबंध में कोई दिनांक नहीं दी गई। अगले दिवस दिनांक 14/10/22 को जब वादी अधिवक्ता एवं सुशील कुमार यादव अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो जानकारी हुई कि प्रकरण वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जा चुका है। प्रकरण में दिनांक 13/10 को अग्रिम कार्रवाई हेतु नियतता तथा प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC सेपटित धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से के निराकरण हेतु तर्क होना था, फिर भी न्यायहित में आवेदक पक्ष को प्रकरण के गुणदोष पर निराकरण के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु उदारता पूर्वक अवसर दिया जाना अनायोचित प्रतीत होता है। ठीक है भाई, कोर्ट का डिस्क्रिशन है ये। Discretion. आपका केस बहुत कमजोर है क्या? No, my lord, it is not like that, my lord. My lord, what has happened in this matter, my lord? The allegations which have been made against this. My lord, if my lord may permit me for a while, my lord, because the allegations are not, because as per the provisions of Order 929, the sufficient cause for non-appearance have to be assigned. Here in this case, my lord, the applicant is labeling accusation upon the court. That court has, he appeared before the court has not recorded his appearance, and on the next day an antedated order has been passed. कोर्ट ने गलती मान ली ना अपनी, कई बार हो जाता है। My lord, वो predecessor थे, my lord. ठीक है, प्रेडिसेसर की गलती मान ली और बड़ा बड़प्पन है। अपनी गलती मानने से ज्यादा बड़ा बड़प्पन है प्रेडिसेसर की गलती मानना। My lord, but even otherwise also as per the provision of 114 of Evidence Act, there is a presumption of regularity. 27 में भी तो बहुत लिमिटेड स्कोप है, मटेरियल इरेगुलरिटी होना चाहिए। My lord, कैसे इंटरफेयर? अरे भाई, रीजन भी सन असाइन नहीं किया है, my lord. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। My lord, may I pray at least it may be remanded back so that he may apply because order में कोई रीजनिंग नहीं है सर। सचिन जैन साहब है ना आप? My lord, आप विड्रॉ करेंगे, हमें खारिज करना है, क्योंकि हम खारिज करेंगे तो वो आपके दावे में, आपके प्रति दावे में कष्ट देगा आपको। आप विड्रॉ करेंगे तो आपकी सौजन्यता बनी रहेगी। I will withdraw it. Shri Sachin Jain, after arguing for some time, prays for withdrawal of the petition. Accordingly, same is dismissed as withdrawn. Tell you. I am obliged. Number 31. Your Lordship, the Tehsildar allowed my application for a correction of plan record. There are against which appeal was filed by the respondent. In the pending appeal, an application under Order 1 Rule 10 was filed. The subdivisional officer has rejected the application under Order 1 Rule 10, against which the petitioner preferred the revision before the additional collector. Surprisingly, the additional collector, set aside the original order passed by the Tehsildar. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, parties shall maintain a status quo in regard to the suit property till the next date of listing. Your Lordship, obliged. Number 32. The opportunity. My lords, this matter is listed today for admission, my lords. My lords, I am seeking permission to file Vishwa Vidyalay Anudan Ayog Adhiniyam 1986, my lords. बता दीजिए पहले। Yes, my lords. मैटर क्या है? My lords. My lords, this is... Your application for correction of your date of grant of senior scale and selection scale has been rejected. Yes, my lords. तो सिर्फ नोटिस इशू हो कि उनका जवाब बुलाना है। Yes, my lords. बुला लेते हैं। Much obliged. उनका नाम डालिएगा। Ms. Kaushiki Sharma, learned counsel for the petitioner. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Number 33. Obliged. My lord, in this case, I want to withdraw the petition with a liberty to raise an industrial dispute because SHRI. R.C. Srivastava. Rajiv Chandra Srivastava pays for withdrawal of this petition with liberty to raise the industrial dispute. Okay. Petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty.
Case number 34. In this case, they have rejected my candidature of compassionate abandoned. किस ग्राउंड पे कर दिया? ग्राउंड पे ये कर दिया कि हमारी बहन नौकरी कर रही है, और जबकि ये था कि 2011 में मदर की डेथ हुई, 17 में वो की, हम उस समय माइनर थे, 19 में मेजर हुए। तो मेजर जब 19 में जो पॉलिसी उस समय थी वो हमको एप्लीकेबल होगी, जब मेजर होंगे तो हमको 1 साल के बाद आवेदन, 1 साल के भीतर आवेदन हमने दे दिया है। तो उन्होंने उस समय हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, इधर से उधर शटल कॉक की तरह कराते रहे, कहीं भोपाल से मार्गदर्शन, कहीं यहाँ से मार्गदर्शन, अल्टीमेटली उन्होंने इनसे मार्गदर्शन ले लेते। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या कह दिया? मैं मार्गदर्शन दूंगा तो पिटीशन ही खारिज हो जाएगी। P1 में क्या हुआ? हाँ, इसमें P1 में तो P1 नहीं, सॉरी P10 में यही बोला सर उन्होंने। क्या बोल दिया? कि इनकी बहन नौकरी कर रही है। अच्छा, विवाहित हैं अविवाहित हैं? अविवाहित है, 2 बच्चे थे, बहन भाई थे, दोनों माँ बाप की डेथ हो गई। हम अपनी माँ की जगह अनुकंपा नियुक्ति चाहते हैं। लॉर्ड जी पेज 28 देखें। पेज 28 यस, इसमें ये है 3.2 में सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति। 28 P12 में P12 इसमें सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों 3.8 3.2 में 3.2 पढ़िए प्लीज। पेज 28 सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक उपलब्ध होने पर ही आश्रित को अनुपन्न पाता, परंतु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस। आप बड़े, बहन बड़ी है? हम बड़े, आप बड़े हैं। हाँ? तो उसकी मैरिज भी होगी, मैरिज के बाद उसकी नौकरी लगी है, उन्होंने कहा एफिडेविट दे दो। वही तो आपसे पूछा था क्या कि वो मैरिड है, सिस्टर मैरिड है। ठीक है, तो इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ पर रजिस्टर्ड एडी पोस्ट। यही तो मैंने आपसे पूछा था। मैं सुनने में शायद गड़बड़ हो गया सब। आजकल क्या बेहोश से आते ना सर, ये थोड़ा डर लगता है। कौन बेहोश हो जाते हैं? अब वकील साहब एक बेहोश हो गए ना अभी 10 मिनट पहले, RS पटेल साहब। अरे आई एम सॉरी, कुछ आर्गुमेंट के दौरान हार्ट अटैक हो गया। अरे अभी कैसे हैं? अभी अब तो हॉस्पिटल ले गए जबलपुर। नहीं, श्री प्रवीण कुमार वर्मा कर लेना इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ पर रजिस्टर्ड एडी पोस्ट within 7 days, returnable 4 weeks. Obliged. Case number 35. Whether petitioner is seeking direction to respondent objection of his service on the post of salesman and regularize his service 7/4 कहाँ है आपका अभी आवेदन? My lord, same order has been passed in Lecture P6 and division bench also dismiss the order in Lecture P7, my lord. Petitioner is claiming parity with order in Lecture P6. साइड करने का ऑर्डर लगा। हाँ, वही order passed by a coordinate bench. डिवीजन बेंच डिसमिस किया है अपील शासन। अरे भाई जी my lord, आपको उसी ऑर्डर का चाहिए ना? जी my lord, सेम ऑर्डर कर दीजिए। Facts are to be फैक्ट्स मत लिखिएगा। इसमें representation whereby respondents have whereby coordinate went directed the respondents to consider the case of the petitioner and if found eligible to extend the benefits of the judgment in case of Saroj Kumar Shukla decided on 13/10/2004 in WP number 16933/2003 full stop. In same terms, petition is disposed of. This court has not expressed any opinion on the merits of the case. इसमें कृष्णलाल वर्मा का भी हवाला दे दें। इसमें डिवीजन बेंच ने अपील खारिज किया है। Lecture P6 my lord। वो सरोज के साथ साथ संत कुमार शर्मा, कृष्णलाल वर्मा। अरे भाई P6 जो है आपका वो संतलाल वर्मा नहीं, कृष्णलाल वर्मा है my lord, पेज 21। Sir, this is the order मतलब whereby the petition was allowed मतलब। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। कहाँ है इसका? The admission stage वर्मा जी का कहाँ है ऑर्डर, बताइएगा। पेज 21 my lord। पेज 21 तो लगा ही नहीं, P6 लास्ट एनेक्सर लगा है। एक सेकंड, सॉरी नहीं सर, सॉरी ये होगी फिर my lord। हाँ, एक सेकंड। कृष्णलाल वर्मा का है। So also keeping in mind the judgment of coordinate bench of this court in Krishan Lal Verma
WP 1488/2009 ब्रैकेट में S। चलिए And division bench also dismiss appeal, my lord P7, my वहाँ lord, बताइएगा। इसका भी Next हवाला case। पेज 25 में। चलिए। Number 36. Lord, the challenge is to the order annexure P1 whereby the petitioner, who is an employee of a society, has been suspended by the chief executive officer of the District Central Cooperative Bank, my lord. Petitioner being the employee of the bank, my lord, the rules say, my lord, that the suspension has to be done by the bank prabandhan, my lord, the management of the bank. तो क्या आजकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक के? नो नहीं सर, ये बैंक के DCCB के एम्प्लॉई हैं सर। ये इसमें ये इनका सर्विस कंडीशन। I have filed the service. नहीं सर, ये these are the rules. CEO is competent to। बताइए सर मैं ये जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के सेवा नियम। हाँ। 61 says my lord, जी। अधिकारी कर्मचारी के पदनाम बैंक कर्मचारी के विरुद्ध साधारण दंड व गंभीर दंड देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारियों एवं स्टाफ समिति व स्टाफ उप समिति को होगा। कर्मचारी अधिकारी के पदनाम वर्ग 1, 2, 3 के कर्मचारी साधारण दंड के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गंभीर दंड के लिए स्टाफ उप समिति। उसके बाद वर्ग 4 एवं 5 के कर्मचारियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गंभीर दंड के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी। संवर्ग के कर्मचारी The competency lies with CEO। ये दंड की बात कर रहे हैं, मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूं, मैंने रूल लगाया हुआ। सर ये साधारण दंड और देख लेते हैं, मतलब उनको भी तो सुनने दीजिए। मैंने स्पेसिफिक रूल भी फाइल किया है सस्पेंशन। हाँ देख लेते हैं ना। जी कहाँ है सस्पेंशन का रूल? P3 में सर। P3 पढ़िएगा। ऐसे सेवायुक्त 52.1.1 is the relevant 52.1.1 at page number 14, Lord. पेज नंबर 14, your lordship. 52.1.1 जी। ऐसा सेवायुक्त तो जो बैंक के सेवा नियमों, बैंक के आचरण नियमों में उल्लिखित नियमों के विपरीत कृत्य करने अथवा अनियमितताएं करने तथा बैंक प्रबंधन के संज्ञान में आने पर प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है, उसे बैंक प्रबंधन द्वारा निलंबित किया जा सके। जी आगे पढ़िएगा। जी ऐसा सेवायुक्त जिसके विरुद्ध कदाचारण मेजर मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जांच में लंबित रहने के दौरान भी निलंबन के लिए उपयुक्त आधार एवं कारण पाए जाने पर निलंबित किया जा सकेगा। निलंबन का ऐसा आदेश लिखित में हो। जी अथॉरिटी लॉर्ड इज द बैंक मैनेजमेंट। जी according to them what they are saying, what is the locus of the chief executive officer in the management of the bank? Chief executive officer is subordinate to the bank, my lord. My lord, may kindly see the definition 2.9 in the next page, lord. I have enclosed रुक जाइएगा। and this has been dealt with by ये पढ़िएगा जरा नियम 60 का 4। इसको मैं निशान लगा के दे दे रहा हूँ जी। ये पढ़ लीजिए, पढ़ा दीजिएगा इनको जी। पेज 110 9 से कंटिन्यूएशन पढ़िएगा, 110 पढ़िएगा। आपको देना सर, मैं पढ़ूं? आप दोनों मिलके पढ़िए। पेज 109 से शुरू करिए, पेज 108 पे निलंबन आता है, पेज 110 पे ऊपर से पढ़िएगा। यदि कर्मचारी द्वारा बैंक के कार्य जैसे वसूली आदि प्रकरणों में किसी व्यक्ति द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई की जाने पर कर्मचारी 48 घंटे से अधिक अवधि तक, वो तो कंडीशंस बता दी उन्होंने 3-4 की, जिसके अंदर फिर अगला पेज पलटिए, कॉम्पिटेंसी आ जाएगी। 4 आ गया। कर्मचारियों को निलंबन करने के लिए सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, किंतु उपरोक्त खंडिका 3
2 की परिस्थिति को छोड़कर शेष मामलों में स्टाफ उपसमिति से निलंबन आदेश की पुष्टि करना आवश्यक होगा। यदि स्टाफ उपशासकीय समिति वही चीज होल्ड करी है जो मैंने जजमेंट लगाया 3 माह में पुष्टि नहीं की जाती तो निलंबन आदेश स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। that has been dealt with by this honorable court in P5 my lord. I have filed one of the orders of the court. जी क्या मे भी स्टाफ ऑफ समिति को ही कॉम्पिटेंट माना है। नहीं, इसमें तो जो है लिखा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और 3(2) के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी स्टाफ उप समिति की। 3(2) क्या है? 3(2) पढ़िएगा। 3(2) है यदि आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो का लोकायुक्त वो तो है ही नहीं, उसमें लेनी है स्टाफ उप समिति की कॉन्करेंस, अदरवाइज नहीं लेनी। लाइए किताब दे दीजिएगा। I'll have to verify ये पुरानी किताब। अब ठीक है, क्या करें जी ठीक है। Rules have been changed. Petitioner's contention is that petitioners are aggrieved of the order of suspension passed by the Chief Executive Officer, District Central Cooperative Bank, Chhatarpur, whereby petitioners have been placed under suspension. Petitioner's contention is that as per Rule 52.1.1 annexure, that is annexure P3 block. P3, authority to suspend an bank employee is rests with the bank management and not with the CEO, and therefore the order is prima facie illegal. Next pair. Shri VIVEK Sharma, learned Deputy Advocate General, placing reliance on Rule 60 of Jila Sehkari Kendriya Bank Karamchari Seva Niyam, submits that as per Rule 60 within bracket 3, circumstances have been given under which an bank employee can be placed under suspension. By CEO. Thereafter, 1/11/19 के बाद स्थिति बदली है। If your lordships would keep it in Passover, I'll bring the new book because I feel this is not. लिखा के फिर रख देंगे, पासवर्ड में रख देंगे। And as per para 4 of Rule 60, the competent authority to place an employee under suspension is Chief Executive Officer, but in case of subclause 2 of para 3, he is required to take approval of the staff subcommittee. Full stop. Clause 2 of para 3 deals with suspension in the matter of filing of charge sheet by Economic Offence Wing or Lokayukt Office, or in case of detention for 48 hours or more. Full stop. Thus, Shri Sharma submits that competent authority is the Chief Executive Officer. Next pair. Shri Anil Lala prays for Passover to verify this situation in as much as according to him in 2019 rules have been amended. Full stop. Let amended rules be brought on record. Matter be taken up as a Passover. आपको 60 का 4 बताना था, आप 61 पढ़ रहे थे। नहीं सर, उसमें अरे ऐसा मत करिए, इतना आगे मत चलिए। सर लॉर्डशिप काइंडली प्रेफर पासओवर लॉर्डशिप। पासओवर कर दीजिएगा। My lordship, that the petition police constable भर्ती प्रक्रिया my lordship, that the this honorable court that the प्रवीण कुमार कुर्मी ये केस जो है डिसाइड हो चुके हैं my lordship। दिखाइए। सेम ऑर्डर कर दीजिएगा, ये लीजिए। एनेक्चर P7 है रिप्रेजेंटेशन my lordship। और P7 एनेक्चर कर दीजिएगा। Without expression on opinion. हाँ, वो तो है ही, understood, without expressing any opinion. Sir. आप ही हैं क्या शुक्ला जी इसमें, कोई और विजय कुमार है? अच्छा, कितने हैं यहाँ पर? 4, 5, 6। None for the petitioner, हैं? कितने? अरे तुम तो गिनती सिखा रहे हो यार।
3, 4, 5 चेक कर रहे हो? None for the petitioner. रिप्लाई आ गया आपका? सर इसमें रिप्लाई नहीं, नोटिस ही नहीं हुआ है सर इसमें। अरे इसमें इन्होंने आवेदन लगा दिया, कोई WP डिसाइड हुई है 16572/14 उसकी लाइट में डिस्पोजल करने के लिए। इशू नोटिस, लेट रिप्लाई बी फाइल्ड, नन करके विद इन 6 weeks लिस्ट देयर आफ्टर। एक मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट केस। Number 41. बताइएगा। This is a review, my lord, of the order Which of order? coordinate bench. कोऑर्डिनेट बेंच नॉमिनेशन है हमारे। Not that has to be seen because this is listed for the first time before, my lord. Review of a coordinate bench has been listed before this court. Nomination from Honorable the Chief Justice is mandatory. Office to verify whether any nomination has been obtained or not. List after obtaining appropriate nomination as per rules. Honorable Judge. I'm seeking 2 weeks indulgence in this matter. This is the matter in my lord connected matter. प्रिंसिपल साहब का जो झगड़ा है जो है, जी वो कुछ ऑर्डर पास किया, उसके रीजंस वगैरह मालूम नहीं हम लोगों को। वो सेम वैसे ही लिस्ट निकाल, यूनिवर्सिटी का ऑर्डर हो गया। ऑर्डर तो हमको दिया नहीं सर, वो लिस्ट फिर से निकाल दी विद द सेम पोजीशन। श्री मनोज कुमार शर्मा, लर्नड सीनियर एडवोकेट, assisted by Shri Kaji Fakhruddin, Shri Vijay Kumar Shukla, panel lawyer for state, with Shri Miss Kaushiki Sharma for the respondent number 4. Shri Sharma, Manoj Sharma praised for and is granted. कितना समय चाहिए? 2 weeks. 2 weeks time, list thereafter. Number 43. Indeed, bunch of matters, lordship, the order has been complied with and the entire payment has been made to the workman, lordship. Infractions हो गई। Infractions हो गई ना petition? 17B was directed to be complied. अच्छा 17B की compliance हो गई है। Lordship, I may be granted 2 days time to bring those documents. I have supplied calculation sheet and the payment detail. Shri Rohit Sogara, Lordship, please for some time to bring on record compliance of section 17B. He may do so within 7 days. List thereafter. I am obliged. Number 44. बताइए भोलेनाथ जी। My kindly see my last order sheet, my lord. जी कुछ त्रुटि हो गई क्या? My lord, माननीय न्यायालय ने आदेश किया था, my lord. जी हो गई कंप्लायंस आपकी? Not in fact, if I may, the cost will not deposited on 22nd itself. वो तो कॉस्ट तो बड़ी मेहरबानी कर रही, कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई? वो कंसिडर ही हो गया, not that. क्या रिकंसिडर हो गया? वो दे दिया। हाँ? With that option form का जो because of that जो increment रुका था वो दे दिया। तो दे दिया ना इनका? बस खत्म हो गई, इंक्रीमेंट मिल गया आपको? मतलब अभी मिला तो नहीं। इसमें ऑर्डर लगा है 27/2/2024 का। वो तो मेरा जब नेक्स्ट सैलरी है तब से जैसे आपको सैलरी मिलेगी मिल जाएगा, ठीक है? ऑब्जर्वेशन में कर दो तो इसमें दिस पिटीशन इज फाइल्ड सीकिंग implementation of the mandate of Madhya Pradesh with pay revision rules 2009 and the circular dated 25/5/2009 which provided for grant of increment on pay fixation, full stop.
Now respondents have come up with a document dated 27/2/2024 issued by the principal of Government Girls Higher Secondary School, Kirnapur, mentioning therein that petitioner has been given that benefit of increment and therefore nothing survives for adjudication. He submits that the payment of arrears will also be paid along with the next salary. In view of such submission made by Shri Ankit Agrawal, Shri Bholenath Sharma prays for withdrawal of this petition with liberty to agitate in case any dues are left. The payment of arrears will be made as soon as the entire thing is assessed, whether it's next salary or not. That Next salary की अगर by within period of 30 days कर दीजिए salary. obligatory. ये documents को taken on record ले लीजिए. Petition is disposed of. My lord, with court permission, my lord, today I filed the rejoinder in this matter, my lord, requesting for next week's. Matter क्या है? Matter, my lord, assigning seniority का है, my lord. The petitioner's contention is that he has filed rejoinder today. Additional return, if any, be filed within 4 weeks list thereafter. Oh, bless. Number 46. Lord, P1 is the impugned order. Lord, a pay scale was given to the petitioner and other members that has been withdrawn by this order, my lord. May I read the order, my lord? Page number 15 is. Please. जनजाति कार्यालय विभाग सीधी के तत्कालीन सहायक आयुक्त श्री एल मीना द्वारा अवैधानिक रूप से पूर्व में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित किया गया था। उक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण अवैधानिक होने से जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमितीकरण समाप्त किए जाने के प्रतिवेदन के अनुक्रम में समस्त कर्मचारियों का नियमितीकरण आदेश न्यायालयीय शाखा द्वारा निरस्त किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थगन प्राप्त किए जाने के पश्चात नियमित वेतनमान पर कार्य किए जाने हेतु आदेशित किए जाने के। Where is the order of the stay? मिलोड इसमें लिखा ना स्थगन के कारण। मिलोड दैट्स व्हाट मिलोड दिस ये स्थगन की जो बात कर रहे हैं मिलोड, दैट पिटीशन इटसेल्फ इज डिसाइडेड एंड अलाउड मिलोड। दैट ऑर्डर आई हैव फाइल्ड मिलोड। मिलोड it is at page number 22 and excerpt P5 मिलोड। Before that, my lord, issue notice to the respondents on payment Lord, by registered AD post. my lord, may humbly pray, my lord. Is returnable 4 weeks. My lord, these orders, my lord, has already been quashed by the coordinate bench, my lord. That order I have filed at page number 27, my lord. And excerpt P9, my lord. क्या क्वेश कर दिया? By virtue of, my lord, this जो स्थगन आदेश की बात कर रहे हैं उसकी वजह से ये ऑर्डर पास किया गया था। व्हेन दैट पिटीशन इज ऑलरेडी उसके बाद तो वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई है, तो इसलिए जो है मिलोड बुलाने दीजिए, जवाब बुलाने दीजिए। देखिए जवाब आने दीजिए। ऑब्लेज Number 47. Lordship, but on the last date notices were issued, not so well. It was for time to file. Arun Kumar Dwivedi for the petitioner, Shri Ankit Agrawal prays for and is granted 4 weeks time to file reply list after 4 weeks. Next case. Yeah. But I'm praying for withdrawal of this petition to file it before the Indore bench. Shri Parasnath Das prays for withdrawal of this petition with liberty to file it before the Indore bench. With the aforesaid liberty, petition is dismissed as withdrawn. Number 49. Lord, they have filed with court order. The
Affidavit of C has already been filed. जी क्या कहा सी साहब ने? Lordship, that order was never been placed before the appellate authority. The order was issued by the clerk against whom the disciplinary action has already been taken. Kindly see Annexure P10. एक सेकंड. P10. P10. जी. Although it is issued in the letterhead of the superintending engineer. जी. But kindly see in the bottom, अधीक्षक यंत्री लिखा है, उसमें सील लगा दी अनुविभागीय अधिकारी की. एक क्लास 3 एम्प्लॉई हैं. हमारी नॉलेज में, ऐसी की नॉलेज में कभी आया ही नहीं. तो as soon this honorable फिर ऑर्डर को विड्रॉ कर लीजिए. नहीं, आपका ऑर्डर ही नहीं है. उसमें क्या हुआ, जो एनेक्सर P11 है वो सीयू में तो जारी किया है. ई ने चूंकि वो रिटायर हो रहा था 2 दिन बाद. नहीं, पहले इस ऑर्डर का तो स्पष्टीकरण कर लें कि आपके किस बाबू ने ये आदेश जारी किया. Lordship, kindly see, I have submitted the detailed explanation and. हाँ बताइएगा. पैरा. हाँ. 6 Lordship. पैरा 6 पढ़िएगा. Of my reply. हाँ हाँ पैरा That 6. at the outset, answering respondent tendered unconditional apology for causing any kind of inconvenience of this honorable court in compliance with the order dated 6/2/14 and 13/2. It is submitted here as under that. The order dated 27/9. पैरा नंबर 6 है कहाँ आपका? रिटर्न में है लॉर्डशिप. हाँ रिटर्न तो किस पेज पर है? 5 के बाद पेज नंबर 4 पे है लॉर्डशिप. रिटर्न के पेज नंबर 4. हाँ रिटर्न के पेज नंबर 4 पे देखिएगा. 6 कहाँ लिखा है? ऊपर टॉप पे है लॉर्डशिप. टॉप पे तो एफिडेविट इन कंप्लेंट. एफिडेविट इसके जस्ट नीचे 2 लाइन के नीचे 6 से स्टार्ट हो रहा है. 6 लिखा ही नहीं आपने. हमारे इसमें लिखना ही भूल गए 6. अच्छा उसमें गलती हो गई होगी. इसमें 6 है, उसी की फोटो. एट द आउटसेट. चलिए. हाँ हाँ. एनी काइंड क्या होता है लॉर्डशिप? एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस क्या होता है? दस्तावेज तो आप ही का है. नहीं मतलब क्या हुआ कि हमारा पूरा स्पष्टीकरण ये है. एक एएन घर का क्या हुआ फिर? रिटायर हो गया? शोकाज नोटिस दिया है. शोकाज नोटिस. एनेक्सर R1 लॉर्डशिप. R1. जैसा कि इस कार्यालय की कार्यालय सहायक 3 के पद पर पदस्थ कर अनुविभागीय अधिकारी के दायित्वों का सजगता पूर्वक. नहीं ये सब नहीं. यू आर ट्राइंग टू सेव समबडी. P10 में आपने ये कहाँ लिखा है कि अधीक्षण यंत्री के हस्ताक्षर नहीं है, इसने हस्ताक्षर बनाए हैं? अनुविभागीय अधिकारी ने अपनी सील लगा के उस पर दस्तखत किए. सील अनुविभागीय अधिकारी तो ये तो असिस्टेंट ग्रेड 3 है जिसको आपने नोटिस दे रहा है. अनुविभागीय अधिकारी कौन है? यही था असिस्टेंट ग्रेड 3 अनुविभागीय अधिकारी का कास्ट पोस्ट होल्ड किया था. अच्छा. इसमें 6.1 में हमने स्पष्ट किया है. जी. That the order dated इसी ने खुद सिग्नेचर की है उस पे. इसने खुद दस्तखत किए हैं, उसको शोकाज भी दिया है. जी. फिर क्या हुआ? सुपरिन्वेशन का सवाल है, वो चूंकि 2 दिन बाद रिटायर हो रहा तो इस लेटर के बेस पे उसको सुपरिन्वेट नहीं किया. हाँ. वो सुमोटो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपना डिसीजन लिया है. अच्छा. इट वाज नेवर बीन प्लेस्ड बिफोर द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. कितने साल की उम्र में रिटायर कर दिया उसको? 60 साल की उम्र. जी. 2 दिन बाद रिटायर हो रहा था. क्या एज ऑफ सुपरिन्वेशन है? सॉरी 62 में कर. इनकी ग्रीवेंस क्या है फिर? इनका ग्रीवेंस इतना था कि हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया था. वो बिना स्टे दिया उसको हमने स्टे मानते हुए उसको रीइंस्टेट कर दिया. वेदर द रीइंस्टेट वाज नेवर बीन मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरिम स्टे लॉर्डशिप. रीइंस्टेट वाज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमोटो. कहाँ है वो ऑर्डर? P11 लॉर्डशिप. P11 पढ़े जरा. इसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं किया हाई कोर्ट का आदेश. पेज 47 ऑफ द रिट पिटीशन. हाँ. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सच नागौन दिनांक 4/7 नीरू सेन के क्या लगते हैं ये? घनश्याम प्रसाद सेन पिटिशनर के ससुर लगते हैं. यस. तो क्या आप एस्ट्रेंज्ड डॉटर इन लॉ हैं क्या? यस. झगड़ा चल रहा है आपका? नहीं झगड़ा नहीं चल रहा. हमारा चूंकि आई वाज रेप विक्टिम बाय फादर इन लॉ, सो आई लॉन्च्ड ए कंप्लेंट, लॉन्च्ड एन FIR. The FIR was lodged and he was granted. FIR है, आप उस FIR को लॉजिकल एंड पे ले जाइए. या सर्विस मैटर में आपको क्या दखल होगा? हाँ, सर्विस मैटर में कि he was in service but he was and on the basis of my FIR he was placed under suspension. ठीक है. अच्छा, thereafter by showing him as agriculturalist he obtained anticipatory bail from this honorable court. वहाँ जाके उसको thereafter लगाइए. charges भी are my lord.
चार्जेस नहीं, एंटीसिपेटरी बेल किसने दी है? नहीं, दिस ऑनरेबल कोर्ट, मैंने दिया है। नो नो, दिस ऑनरेबल कोर्ट। अरे किस बेंच ने दिया है? जिसने भी बेंच ने दिया, जिस बेंच ने दिया उसका नाम बताइए ना, वहाँ भिजवा देते हैं। ऑनरेबल जस्टिस श्री वी मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस श्री, वहाँ भिजवा देते हैं। वो उन्होंने कैसे, और आपने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई कि वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है? यस, लगाई थी, इट वाज रिजेक्टेड। हाँ, कहाँ पर है ये? नहीं, दिस आई हैव नॉट फाइल्ड। ये सब लिख लेते हैं, इसको चीफ साहब के सामने फाइल रखवा देते हैं। इसमें तो सिर्फ नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं, इतना सिंपल नहीं है। हाँ, आप इतना सिंपल नहीं है। देखिए, और स्टे ऑर्डर कहाँ है हाई कोर्ट का? नहीं, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है ही नहीं कहीं। अच्छा, और पी जो स्टे ऑर्डर जो इन्होंने कहा है कि स्टे ऑर्डर है, जिसके बेस पर उसको रिस्टेट किया गया है, वो मैं बता देता हूँ, जिसको एक्चुअल में स्टे ऑर्डर नहीं है। वो एनेक्सर P8, हाँ, in it simply a direction was given that you take any decision on his appeal, बस nothing else. लिखिए at page 43. देखिए, petitioner is a victim whereby her father-in-law, private respondent number 5 Ghanshyam Sen, had outraged her modesty. Full stop. Petitioner's case is that she had lodged an FIR against Shri Ghanshyam Sen. Full stop. Respondent Ghanshyam Sen had obtained anticipatory bail from a coordinate bench. कहाँ है वो ऑर्डर एंटिसिपेटरी बेल का? नहीं, I have not filed in this case. आपके It is with the writ petition, page P5.2. had obtained an anticipatory bail from a coordinate In bench MCRC number in 560. MCRC number 56044/2023 2021 P5. representing himself to be an agriculturist. कहाँ लिखा है इसमें कि वो he was an agriculturist? ये पेज 30 in the cause title, Ghanshyam Sen depicted himself to be an agriculturist, whereas fact of the matter is that Ghanshyam Sen was an employee of Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, and he was allowed to superannuate by the executive engineer wide order annexure P11 dated 27/9/2023. Full stop. Thus, it is evident that Ghanshyam Prasad Sen, who was working as a line attendant with Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company, had misrepresented himself to be an agriculturist for the purpose of obtaining anticipatory bail from a coordinate bench in MCRC 56044/2021. Thus, it is submitted that private respondent is playing fraud on the system, and when an application for cancellation of anticipatory bail was filed by the petitioner, then the coordinate bench had dismissed the same without causing an inquiry that how and under what circumstances respondent number जो भी था 6 से शायद 5 had represented himself to be an agriculturist. Full stop. It is a serious matter. Full stop. Misrepresentation of facts amounts to perjury on a court. Full stop. The coordinate bench was duty bound to take this aspect into consideration. Full stop. Notices should have been issued to the delinquent, be it the respondent number 5 or his counsel, for misrepresenting his status as an agriculturist, whereas at that time he was in active service of Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, as is evident from annexure P11, by which he was superannuated with effect from 30/9/2023
Next paragraph. There is further misrepresentation by one of the employees of the Madhya Pradesh Purv Kshetra Vidyut Vitran Company, namely Shri A.K. Garg. क्या नाम है उसका घर का? एक एन गर्ग, एक आपने लिखा है ना एफिडेविट में, नाम बताइए. एन गर्ग. A.N. Garg, who is a assistant grade 3 and was working as in charge अनुविभागीय अधिकारी, sub-divisional officer, who had written annexure P10 dated 27/9/2023 to the executive engineer, misrepresenting a fact that there was a stay on the suspension of the private respondent number 5 and directed to reinstate him. Full stop. This communication dated 27/9/2023, though Shri Mukesh Agarwal submits, has no correlation with the order dated 27/9/2023, annexure P11 passed by the executive engineer, but it's a serious matter. Shri Garg is also guilty of committing forgery, and merely issuing a show cause notice is not sufficient. He was trying to help an unscrupulous element and has become party to the crime. Full stop. FIR should be lodged against said Shri Garg for misrepresenting the facts by writing annexure P10, and that too in the name of the superintending engineer. Full stop. If the document annexure P10 contains signatures of Shri Garg, then Shri Garg is to be held responsible, and if it contains signatures of the superintending engineer, then action should be taken against the superintending engineer for misreading the orders of the High Court. कहाँ है order annexure? एनेक्जर P8 है मेरा, P8 44 पेज 43 passed in WP number 23904/23, Ghanshyam Prasad Sen versus State of MP and others, wherein said another coordinate bench directed for while disposing of the petition, directed the appellate authority to take a decision on petitioner's appeal contained in annexure P1 क्या है? Expeditiously as possible, preferably within a period of 60 days from the date of production of certified copy of the order. Thus, it is evident that order of the coordinate bench dated 23 September 2023 never granted any stay on the suspension of the said Ghanshyam Prasad Sen. Thus, it is evident that whole department of Madhya Pradesh Purv Kshetra Vidyut Vitran Company is in unholy nexus with Shri Ghanshyam Prasad Sen in helping him by misrepresenting the orders of the High Court. Full stop. Contempt notices, let reply be filed that why contempt proceedings be not drawn against the executive engineer, concerned executive engineer, superintending engineer, chief engineer to whom an endorsement was made of annexure P10, and for distorting the orders of the High Court and giving them colored interpretation. Full stop. Notice be also issued to Shri Garg and his handwriting samples and signatures be produced by the respondents before this court, so that they can be prima facie matched as to whether he is the author of annexure P10 or somebody else has authored annexure P10. Let needful be done within 7 days by the Chief Engineer, Rewa Zone, Madhya Pradesh Purv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited. Full stop. Notice be also issued to Shri Ghanshyam Prasad Sen, respondent number 5, that why a fresh FIR for playing fraud with the High Court be not registered against him by showing himself to be an agriculturist while obtaining anticipatory bail from the High Court. May I submit, Lord? Yes. Kindly see, Lord.
It's my explanation. While disposing the writ petition by the Honorable Coordinate Bench, the Coordinate Bench has simply disposed the appeal be decided. The Executive Engineer has not violated the order of this Honorable Court. He was not even in the अरे पूरी क्रोनोलॉजी नहीं, हम समझ गए हैं, पूरा आने दीजिए। ये पत्र पर पावती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, नहीं पत्र पे पावती P10 पर है, पत्र पे नहीं वो हम समझ गए, बहुत क्लेवरली उन्होंने सब पूरा नेक्सस हम समझ गए हैं इसमें, इसीलिए हमने कंटेम्प्ट नोटिस जारी करने के पहले आपको शो कॉज दिया है, ठीक है? इतना सिंपल नहीं है, ये सब जो है जेल जाने की तैयारी में है। 1 हफ्ते में रिप्लाई फाइल करिए। रिस्पॉन्ड नंबर 5 ऑलरेडी सर्व्ड है क्या? नहीं उसका नहीं, we have already submitted my reply. नहीं ठीक है, नोटिस भी इशूड टू श्री रिस्पॉन्ड नंबर 5 थ्रू हमदस्त मोड स्टेप टू बी। तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्यों नहीं संभव है? नहीं वो आप जो लिख के लाइए, उसने लेने से मना किया। कानून इतना पंगु थोड़ना है जितना आप लोग समझते हैं या बनाना चाहते हैं। ठीक, हमदस्त कर। To respond number 5, in addition to notices through the process of the district court, Satna, directing it to serve the notices on Shri Ghanshyam Sen to appear before this court on the next date and give his explanation on the aforesaid matters as enumerated in the order being passed today. Full stop. Let copy of the order sheet. Today's order sheet be also supplied to Shri Ghanshyam Sen along with the notices and copy of the petition. इसमें चीफ इंजीनियर को इसलिए छोड़ा जा सकता है, उसका तो रोल कहीं नहीं है। ठीक है, देखेंगे, उसका एंडोर्समेंट है। एसी को कॉपी दिया, एसी के बाबू ने अपने दस्तखत से ई को दिया, सी का रोल नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा ना, ये इतने सब तो सी का तो रोल नहीं, सी है। फाइल भी बुला लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा चीफ इंजीनियर, सी का छोड़ के नहीं आने दीजिए, सी को भी देखेंगे। उसका एंडोर्समेंट है P10 का। नोटिस इज बीइंग इशूड टू द सी बिकॉज देयर इज एन एंडोर्समेंट ऑफ एनेक्चर P10 टू द चीफ इंजीनियर and he is bound to explain that endorsement by producing original documents in regard to receipt of said communication. ऐसा थोड़ा है। लिस्ट ऑन 19 मार्च 2024। पास ओवर कर लीजिए। Serial number 51. My lord, bring up to 3 weeks. क्या हो गया? To submit some additional document, my lord. इसको विड्रॉ कर लीजिए आप। My lord, 2 सप्ताह में कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, पिटीशन 24 में लगाएं आप, फिर टाइम मांगे दस्तावेज। नेक्स्ट वीक रख लीजिए my lord। नहीं, कोई इतनी मेहरबानी नहीं, हम इसको 8 हफ्ते बढ़ा देते हैं। देखिए श्री दिमान चंद्र Malik raised for time to file some documents. Full stop. It is surprising that in a fresh petition, time is sought to file documents. On his request, case is adjourned list after 6 weeks. It is a case, my lord, in which, my lord, the petitioner submitted his representation with regard to, my lord, the service emoluments, my lord, after dismissal from service, my lord. जी क्या हो गया? That has not been paid to. क्या हो गया? The petitioner was initially appointed on, my lord, 1995, my lord. As 1994, my lord, and he was dismissed from service in the year 2006, my lord. क्या अपॉइंट हुए थे ये तिवारी जी? ऐसे मैकेनिकल? ये सर, he was appointed as a helper, my lord. फिर उसके बाद सर 2000 Petition said 25/4/2006, my lord, he was, my lord, dismissed from service, and during the period of, my lord, the service period, my lord, the certain amount, my lord, which is still pending, my lord, that has what amount is pending? सर ये ग्रेजुटी वगैरह सर, क्योंकि 10 साल ग्रेजुटी डिसमिसल में मिलती है, कानून तो बताइए पहले सर। ये डिसमिसल के बाद ग्रेजुटी मिलेगी, ये कानून तो बताइए थोड़ा सा। हाँ सर, ये सर चूंकि इसमें मैंने लगाया सर। अरे वकील साहब, कानून बताइए ना, कानून पूछ रहे हैं आपसे। हाँ सर, ये डिसमिसल के बाद किन लाभों की पात्रता है? जी जी सर, जो अमाउंट होगा सर वो मैं आपको उसमें। अरे मुझे थोड़ा चाहिए अमाउंट,
नहीं सर, एक सर मुझे 1 वीक का टाइम दे दे सर, मैं उसको Learned counsel for the petitioner, when asked that what is the entitlement of a dismissed helper who was dismissed from the services of Madhya Pradesh State Road Transport Corporation, raised for time to bring on record the legal provision in regard to entitlement of a dismissed employee. On his request, 2 weeks time is granted, list after holy vacation. चलिए. Number 53. My lords, on last date of hearing, my lords directed respondents to file service bond on record, my lords. They have not filed the same, my lords. And I'm praying for There is non-compliance of order dated दिन 19 को हुआ था. 19/2/2024. Matter is pending since 2014. Delay is on account of the respondents' conduct in not complying with the orders of the High Court. By way of last indulgence, 7 days time is granted to make compliance, failing which किसको बुलाना है? Respondent number 2 and 3 shall remain personally present before the court. List on. उन्नीस मार्च 2024. Next case. 54. May it please your lordship. Well, the petitioner challenges the seniority as also the order of promotion of the private respondent number 4, my lords, on the post of A assistant engineer. The brief facts of this case are like this, my lord. The petitioner and respondent number 4, they were appointed initially, my lords, as junior engineer, my lords, on daily wage basis. This was in 1990. Subsequently, thereafter, in 1992, they were regularized, my lords. In 1990, they were appointed as a daily wager. Yes, that is a document on record, my lord, which comes as annexure. Annexure? If my lord has a perusal annexure P4. P4. जी. और उसी दिनांक से इनको नियमितीकरण किया है 22/12/90. जी. Right, my lords? There's P4 at page 3030. My name appears as serial number 2. Regular, 1 second. जी. Rajesh Vijayvargiya comes at number 2 and respondent SK Soni at number 6. जी. Right, my lords? जी. Now, subsequently thereafter, my lords, it from 1993 to 2012, the seniority on record, my lords, I'm above the private respondent number 4. Now, suddenly, my lord, there is Up till 2012. up to 2012. 2013, the tables turn. And when the seniority list comes out for 2013, I raise an objection. That all throughout- Where is the seniority list of 2013? Now we come at page, my lords, straight away. This is, they give a complete one. यह आता है, इनका डॉक्यूमेंट है. पेज आता है P8 at page 45. जी. P8. And page 45. No, I'm sorry. I'm so sorry. This is about my seniority. It has at page 54. 54. P9, page 54. जी. Right? अंतिम जो seniority list है. At this serial number 2 में SK सोनी आ गए और हम आ गए नंबर 4 पे. एक मिनट चाहिएगा. जी. Right, Malad? जी. 54. जी. And thereon, Malad, I submit P10 is my objection. जी. Right, Malad? Now, thereafter, there is the P12. जी. P12 is the order जी. regarding आपत्ति अमान्य की जाती है, वो P12 है, which comes under challenge. समझ गए आपकी बात. इस आधार पे आपने नहीं, एक और बात इंपॉर्टेंट है.
what happens is P13 से इसको सहायक यंत्री बना दिया. हाँ ठीक है. And एक मिनट, इनका बेसिस क्या है? मैंने अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन पूछा, ये सब मैंने पेश किया है. Let's have a look at the resolution, it is at page 75. Annexure. क्या बेसिस क्या है? This will be annexure. P15. जी. जी. ये जो मीटिंग का है इनका, राइट, मतलब ये 15/12/98 का, इनके जवाब में यही कहा है इन्होंने. ठीक है, पढ़िएगा. 15/12/98 का. Now what is the principle? Now this says initially Nigam's Bhopal office was a part of the AKB in Jabalpur during the period 81 to late 83 and subsequently part of the AK in Indore till September so and so. Bhopal was formed with effect from 16th October 87. Junior engineers and timekeepers were enrolled on daily wages and ad hoc basis and they are regularized between 98 to 92. The employee service rules were for the first time adopted in the year 94-95. Now what is the principle for seniority? Final gradation list. The state government wide is order dated 9th January 1990 copy enclosed has given directions for regularization of class 3, class 4 employees who were working on the daily wage ad hoc till 88. The principle for fixing the seniority was mentioned in the circular as under. Now this circular is not applicable. Why? The circular is on record. Let's have a look. नहीं, आपको सर्कुलर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपकी नियुक्ति 31/12/88 के पूर्व की नहीं है. आपकी नियुक्ति तो 22/12 की है. तो वो भी नहीं है. दूसरा, डिप्लोमा जो इंजीनियर्स हैं या डिग्री होल्डर्स हैं उनको वो अप्लीकेबल नहीं है. सर्कुलर ही बोलता है 9190 का. इफ आई कैन टाइप कॉपी में आ जाए. नहीं ठीक है, जरूरत ही नहीं है ना उसकी. 9190 इज एप्लीकेबल फॉर टू दोज who were appointed up to 31/12/88. Right. You were appointed on 22/12/90. Therefore, this will not be number one. Number two, this is also not applicable. Even alternatively, this is also not applicable to those diploma and degree holders. तो आपने कैसे हमको applicable कर दिया? This is the case. ये बताएंगे. That's all. Initially, my lords, the gradation list of 1996 was made. My lords, there. यानी आपने किस आधार पे इनको नीचे कर दिया ये तो बता दीजिए. My lords, what has happened is, my lords, P8 is the incorrect gradation list. My lords. P8. अच्छा. Incorrect. This is incorrect. Incorrect. From कब से कब Page तक? number 47. ये थी 2006 से लेके 2012 की. अच्छा. नहीं तो हम तो करेक्शन का प्रिंसिपल पूछ रहे हैं आपसे. The correction was done immediately. My lords. किस प्रिंसिपल पर? This is on page number 33, my lords. Annexure. This is P9 and my lords में kindly. P9 33 ये कहाँ हो गया? Sorry, my lords. 53 page number. 53 P9. P9, my lords. The next page, my lords, if may kindly see. अरे हम तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं. What principle you have applied to change the gradation list? The policy, my lords, of the department is, my lords. Where is the policy? Please read the policy. My lord, this similarly placed matter was, my lords, decided earlier. The records were called for. That was 545 of 99. जी फिर रिकॉर्ड आ गया क्या? My lords, that order is there on record, my lords, in the petition they have. Yes, we found that. क्या कहता है वो ऑर्डर? My lords. क्या प्रिंसिपल क्या लागू हुआ? Yes, my lord, that policy has been discussed in that matter, my lord. This is annexure P7. I am not a party therein. Respondent number 4 filed a separate case, not me. There was somebody else who had come to the court. हाँ इसका आदेश कहाँ है? We filed it on record, my lords. It's P7. P7. But in my reply, you answered this is the policy. एक सेकंड रुक जाइएगा. P7. When two people. क्या था? Page 33 it is. Page 33. In the soft copy, my lords, the relevant page is 50. सर कहाँ प्रावधान है ये? नहीं एक थोड़ा समझते चले ना हम. Yes, ma'am. अभी AKVN से तो कानून सीखना है तो ये प्रिंसिपल कहाँ से आ गया ये कि जिस दिन एज के हिसाब से रेगुलर सीनियरिटी होगी ये where is this principle? That would be for the employees who were regularized on the same day. हाँ तो here the employees were regularized on the same day. Here in the same, yes, same day. And my lords, my submission is, my नहीं lords, नहीं प्रिंसिपल कहाँ से आया? Where from this principle has come?
That You is, are, अरे भाई, that is the I'll policy. have to distinguish this order. Where is the principle कि जब इंटर सीनियरिटी डिसाइड करते हुए हम उस ऑर्डर में जिसमें कि नाम रिकमेंड किया गया है वो ना लेते हुए वह ना उस तारीख से करेंगे उस ऑर्डर में करेंगे जिसमें एज सीनियर होगी. ऐसा सिद्धांत तो बताइए पहले. My lords, Where is the principle? my lords, the policy. And where from the coordinate bench has noted down this principle? My lord, this policy, my lords, on page 77 onwards, it is there, my lord. 75 annexure. This is the government of MP. हाँ बताइए कहाँ है वो? 77 में, my lord. Annexure. Unfortunately, the numbering is slightly different in the soft copy, my lord. That is why I am. पढ़िएगा 9 जनवरी 90 पढ़िएगा इसमें क्या लिखा है. The relevant page is number 80, my lords. हाँ 80. पहले तो ऊपर से पढ़े ही ये. My lord. दिनांक 31/12/88 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कार्यभारित एवं आकस्मिकता वय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में एवं जो पद इस स्थापना में स्वीकृत ना हो उनकी नियमित स्थापना में नियुक्ति. ये इस बाबत है ये. तो पहली चीज तो ये 31/12/88 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए, तो ये इस केस में कैसे अप्लाई हो जाएगा? आपके अधिकारी पढ़ते नहीं है. ट्राइफेक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने पास किया होगा ना ये ऑर्डर. किसने किया है? पढ़ते नहीं है. पढ़ते नहीं है कि समझते नहीं है कि मेलाफाइडली काम करते हैं, क्योंकि आई विल बी इम्पोजिंग कॉस्ट ऑल्सो ऑन योर मैनेजिंग डायरेक्टर. How this order can be made applicable to a person who was appointed on 22/12/1990, and you are showing that order of the coordinate bench, which has not applied itself to this circular. My lords, in the reply, my lord, what we have Whatever stated you is- may say, if you say bullshit, then am I required to take that? Because I'll have to write that you are not able to justify this. देखिएगा, petitioner's case is that petitioner was appointed as a sub-engineer on daily wage basis, along with respondent number 4, Suresh Kumar Soni, on 22/12/1990, full stop. Thereafter, wide annexure P4, dated 8/1/1992, petitioner was regularized along with the private respondent with effect from 22/12/1990, full stop. Petitioner's name appears at serial number 2, whereas that of the private respondent appears below him at serial number 6, full stop. In the order dated 22/12/1990, annexure P1, wide which, by removing the anomalies of the administrative setup and on the basis of performance, daily wages were temporarily regularized. Name of the petitioner appears above that of the private respondent. Full stop. Next para. Petitioner's case is that this position continued up to 2012 when petitioner was shown above the private respondent. But in the year 2012, all of a sudden, this position was altered. Private respondent was given promotion on the post of assistant engineer in preference to the petitioner, treating him to be senior. Full stop. Petitioner had sought information under the Right to Information Act, whereby he was informed that petitioner that वो RTI वाला जो that is at page 75. Annexure. That will be the I'm sorry, इसमें वो
पेजिंग में आया 75 क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक साथ पूरा मिला है ना, सो दैट इज P15 उसके साथ है पूरा, P15 के साथ है पूरा RTI का। had sought information under the RTI Act. He was informed by the authorities that the said order was passed. ये hang हो गया. They adopted the principle of the circular, contain the circular. नहीं, एक से वो तो ठीक है, वो तो उसमें हैंग तो हो गया ना ये. आइए इसको. क्यों नहीं ऊपर जा रहा? नहीं हो रहा, कहीं से भी नहीं हो रहा. पूरा टेम्पो टूट जाता है, टाइम बर्बाद होता है. उसमें लिखिएगा देयर इज एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ डिक्टेशन बिकॉज सिस्टम इज नॉट सपोर्टिंग द ओपनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज आर रिफर्ड टू बाय द पार्टीज. Registrar IT is directed to take remedial action and report the matter. ये सब नोट करिए, इनकी कंप्लायंस नहीं आएगी तो इनको डी के लिए शो कॉज नोटिस दीजिए. Wherein he was informed that passed on 15/12/1990 was passed in terms of some board meeting number 43, memorandum number 7, dated 15/12/1998, where the principle adopted for preparing final gradation list is mentioned as under, within inverted commas, the state government by its order dated 9th January, apostrophe 90, comma, within bracket, copy enclosed as annexure, within bracket 1, bracket close, had given directions for the regularization of class 3 and class 4 employees who were working on daily wages or on ad hoc basis till 31/12/88, full stop. The principle for fixing the seniority was mentioned in the circular as under, colon. ये हिंदी में है, पेज 75 पर है. ये 75 है नहीं, 75 पर है. ये कुल की गई सेवा, या तो लिख लीजिए 2-4 लाइनें हैं इन्वर्टेड कॉमास में. कुल की गई सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता आंकी जाएगी और सूची बनाई जावेगी और उसके अनुसार नियुक्तियां दी जावेंगी. पूर्णग्राम. नेक्स्ट 2- वरिष्ठता क्रम निर्धारित करते समय यदि 2 व्यक्तियों की सेवा अवधि समान हो तो उनमें से जिसकी आयु जो आयु में अधिक होगा उसको वरिष्ठ माना जाएगा. पूर्णग्राम, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फुल स्टॉप. thus taking note of this circular dated 9/1/90, it is mentioned that seniority of the private respondent is fixed above the petitioner because he was senior in age. Next para. My lords, can I make a small submission? I apologize for the interruption. My lords, may kindly turn to page number 100 for a second. हाँ, annexure बताइए ना, आपको तो अधिकार है भाई, आप रिस्पोंडेंट हैं, कभी भी इंटरप्ट कर सकते हैं. 100 नंबर पेज बताइए. 100 नंबर पेज बताइएगा. My lords, in page number 100, my lords, as per the annexure क्या है 100 का, कहाँ देखना है 100? It can't be the petition, not petition. 100 नंबर पेज किसका देखना है? My lords, of the petition. हाँ, तो कहाँ है annexure, क्या है? This is, my lords, annexure 94. नंबरिंग ही गलत है. This is at page number 88, my lords, as per the physical. annexure बताइएगा. या तो कंप्यूटर से बहस करने की आदत डाल लीजिए साहिल साहब. My lords, 15. हैं?
Annexure 15. 15. Yes, हाँ तो 15 तो खोला हुआ था, उसमें कौन सा पेज देखना है? my lords, इसमें page number 88, my lords, which is showing on the 88. here, my lords, the seniority list of 1996 is shown, my lords. हाँ हाँ Here, if my lords may kindly see for a second, हाँ the petitioner, my lords, is at page at number 10. 88 बता रहे हैं ना आप? 88. हाँ 86, sorry, 88. 88. Here, he is at number 10, Rajesh Vijayvargi, हाँ and his date of birth is 9/7/67. हाँ And the respondent, my lords, is SK Soni, that is at number 8. हाँ And naturally, my lord, since he is senior, हाँ his date of birth is 1st of July 1960. हाँ Since both of them were regularized on the same day, that is 22. नहीं तो ठीक है, वही तो हम बोल रहे हैं, वो प्रिंसिपल 9/190 के सर्कुलर से आता नहीं है, क्योंकि 9/190 का सर्कुलर एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है ना? This had continued all the way. And This may have continued. क्या लिखा? Senior, full stop. Respondent have also placed reliance on the decision of a coordinate bench in WP 486 of 1998, Vinod Kumar Gupta versus Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam Limited and others, whereby coordinate bench noted the contention of the counsel for respondent number 3, Shri A.K.S. Sanger, that the regularization of service is made by issuance of order on the same day, comma, the inter-se seniority of a regularized employee should be fixed on the basis of their age. Full stop. Reliance was placed on the decision of Ashok Gulati and others versus B.S. Jain and others, AIR 1987. लिखिए, इसको निकाल के लाइए. AIR 1987 SC 424 and Union of India versus HR Patankar, AIR 1984 SC 1587. दोनों निकाल के लाइए. And placing reliance on the said proposition, coordinate bench of this High Court held that कंक्लूड किया. Held after quoting the relevant circular and its paragraphs, subparas 4 and 5 of paragraph 9, held that person senior in age. किस तरीके से लगाया है मैडम, इसको तो पढ़ना भी मुश्किल है. Held that Vinod, that consequence. Held that age can be a basis only if total length of service prior to regularization of more than one employee is same. Full stop.
Next para. It is apparent that this ratio has been culled out from the circular dated 9/1/1990, which has been quoted by a coordinate bench in extensively. Next para. After going through the record, firstly, circular dated 9/1/90 annexure. That's along with P15 उसी के साथ ही 9/1/90 का सर्कुलर आपने अलग से लगाया है 9190 उसी पे है 9190 का 15/12 P15 में ही है P15 में तो कोट किया गया है P15 at page 77 ये दिस इज पेज 77 में है 9th जनवरी का पूरा टाइप कॉपी भी है पेज 77 एनेक्चर दिस इज उसी P15 के बाद ही में कंटिन्यूएशन में ही है पूरा सर्कुलर लगाया है पूरा लगा है टाइप कॉपी Annexure P15 contains the complete circular issued by Government of Madhya Pradesh. Personnel, administrative reforms and training department. Within bracket, pay commission cell bracket close. Bearing number. ये ले लेना इसका सर्कुलर का नंबर इसमें रीडेबल dated 9th January 1990 which in the subject itself reads that it is in regard to regularization of daily wages or ad hoc employees appointed on class 3 or class 4 post prior to 31/12/88 or up to 31/12/88 prior नहीं up to कर देना in the work charge and contingency paid establishment or where posts are not sanctioned under the said establishment then in the regular establishment. Next para. Thus, first thing which is apparent is that this circular is applicable only to those who were appointed up to 31/12/1988. Full stop. It is not the case of the petitioner or the private respondent or the corporation that their appointment was up to 31/12/88. Therefore, prima facie, this circular has no application. Secondly, para 9, subpara 4 and 5 of which has been quoted by the coordinate bench will have no application to the facts of the present case because the subject matter which is covered is in regard to those who were appointed up to 31/12/88 and not for those who were appointed thereafter. Next para. This circular will not have an automatic application to those who were not whose cases are not covered by the said circular. Next para. Even otherwise, this circular is not applicable. वो कहाँ है engineers का वाला जो आप पढ़ रही थी? This is circular में लिखा है ये टाइप्ड कॉपी में लास्ट 3 लाइंस यह आदेश डिप्लोमा डिग्रीधारियों द्वारा शिक्षक पर लागू नहीं होंगे. Full stop. Further, कहाँ लिखा है? ये लास्ट 3 लाइंस है टाइप कॉपी में हमने पेश किया है. टाइप कॉपी का लास्ट पैराग्राफ. हाँ लास्ट 3 लाइंस है बस. लास्ट 3 लाइंस. यह आदेश डिप्लोमा/डिग्रीधारियों द्वारा शिक्षक पर लागू नहीं होंगे. जो 88 के पहले के भी होंगे इनको अप्लीकेबल नहीं होंगे. ये उस पे भी एक डिस्टिंक्शन दे दिया है इनर डिस्टिंक्शन है. मुझे वो लाइन तो मिले. अच्छा पेज इज ठीक है ठीक है ठीक है 77 Full stop. In this very circular, it is mentioned that this order will not be applicable to diploma/degree holder engineers. Sorry, this circular of dated 9/1/1990 clearly makes a mention of the fact that
It is not applicable to diploma oblique degree holder engineers and the teachers. Full stop. This is another vital distinguishing ground which has not been considered by the coordinate bench, and therefore the decision of the coordinate bench is not binding on this court. And oblivious of these two distinctive factors, mechanically, this circular has been applied to determine the inter-se seniority. Next para. As far as ratio of law, full stop. Sorry, next para. As far as law laid down by Supreme Court in Union of India versus H.R. Patankar is concerned, it deals with a situation where there were no rules to determine the inter-se seniority of the direct recruits and the promotees to the same cadre. And in that fact and circumstances, it has been held that direct recruits will be senior to direct recruits through a competitive examination will be senior to promotees from the state civil service. Full stop. That is not the case here, and therefore facts of the case do not call for application of ratio of this judgment to the facts of the present case. Full stop. Similarly, ratio of law in case of Ashok Gulati is also in regard to inter-se seniority between direct recruits vis-a-vis promotees. Full stop. It has been held that the service which has been rendered on ad hoc basis or by stopgap arrangement cannot be considered. However, it does not say that amongst daily wages, inter-se seniority is to be determined overlooking the merit list and overlooking the merit list by giving preference to the age over the merit. Full stop. I am prompted to say this because order annexure P1 is specific. This is order of 1990. It clearly says that within inverted commas, प्रशासनिक पद स्थापना, मैं एक एक को दो बार पढ़ूंगा जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगी. प्रशासनिक पद स्थापना की विसंगतियों को दूर करते हुए एवं कार्य क्षमता के आधार पर निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए पदों एवं वेतनमान पर अस्थायी रूप से नियमित किया जाता है. सेवा के नियमितीकरण दिनांक के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी. Full stop. This order categorically takes into consideration working efficiency of a person, and they have been placed in the order of determination of their working efficiency, which was the criteria for determining inter-se seniority. Thus,
petitioner and private respondent being appointed on the same date, comma, petitioner being found to be more efficient was placed above the private respondent, and once that criteria was adopted, then without setting aside that criteria or upsetting it by saying that petitioner is less efficient than the private respondent, for which no material has been produced by the respondents, comma, inter se seniority could not have been tempered on the basis of a circular, GAD circular, which has no application to the facts and circumstances of the case. Thus, next paragraph, thus petition deserves to be allowed and is hereby allowed. Petitioner's inter se seniority over private respondent Suresh Kumar Soni is restored. Full stop. Since petitioner was not a party in the other litigation, which has been referred to in annexure P7 WP ऊपर लिखाई थी ना वो धर्माधिकारी साहब का order वो note कर लीजिए ना इतना will not bind the petitioner because he was not a party to the said litigation. Full stop. Respondents are directed to restore the aforesaid seniority and extend all the notional benefits of promotion, seniority, pay fixation and payment of actual dues as were extended in favor of Suresh Kumar Soni within period of 45 days from the date of communication of this order. The order of promotion is also under challenge insofar as he is concerned. छोड़िए ना आपको तो परफॉर्मा प्रमोशन चाहिए Great. एक लाइन लिख देना सिर्फ petitioner has been held to be senior is entitled to perform a promotion on the principle of next below rule over and above or at least from the date when his junior Suresh Kumar Soni was promoted. आपको हटाने से क्या मिलेगा आपको नहीं, हटा- एक नया लिटिगेशन खड़ा हो जाएगा नहीं हटा रहे oblige my lords. दे दो साहब को दे दो My lord, this will reply awaited respondent number 3. श्री 30/7/19 का आदेश है my lord. धनंजय चतुर्वेदी फॉर द पिटिशनर किसका रिप्लाई अवेटेड है My lord, ये यूनिवर्सिटी का ये 30/7/19 का ऑर्डर है ये नॉट कंप्लायंस ऑर्डर my lord. हु इज अपीयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी The cause list reflects Ajay Kumar Shukla. हाँ लिखिएगा श्री धनंजय चतुर्वेदी फॉर द पिटिशनर श्री धीरज तिवारी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2. Nobody is appearing for respondent number 3. Though names of the council, namely Shri Ajay Kumar Shukla, Akhilesh Kumar Singh, Satish Yadav, Pankaj Raj Ahirwar, Kapil Duggal, Tabrej Sheikh, Ashish Kumar Kurmi, Rajeshwar Rao, and Rashmi Kaurav are appearing in the cause list. Full stop. As nobody is appearing for the respondent number 3. Respondent number 3 is proceeded ex parte. Full stop. चलिए बताइए आप तैयार नहीं है कि हैं My lord, one Shri week time. Dhananjay Chaturvedi is not ready with the merits of the case. On his request, case is adjourned. Next week my lord. आ जाएगा Oblige. तैयार रहना चाहिए मौके की चीज को समझना चाहिए My lord. Lordship, I'm praying for 4 weeks' time to file reply. My lord, may kindly peruse the order of 30-10-23. कौन सा ऑर्डर 30-10-23, my lord. जस्ट अ मिनट लिखिएगा श्री आपका शुभ नाम बताइएगा Ananya Mishra. श्री अनन्य मिश्रा फॉर द पिटिशनर वाइड ऑर्डर डेटेड 30/10/23 government council was granted last opportunity of 4 weeks to file return. This petition is pending since 2017, that is for over 6 years. State Council Shri Dheeraj Tiwari again prays for time. Full stop. It's a serious problem with the state government. They do not file reply despite being author of model litigation policy, which they are themselves not following. Full stop. Thus,
or subject to payment of cost of rupees 15,000, 10,000, 10,000, 7 days time is granted to file reply, failing which respondent number 2 shall remain personally present. List on 12 March 2024. My lord, if the date may be extended to 14th of March. अच्छा चलिए 14th मार्च कर दीजिए, ठीक है? Highly 14th मार्च. My lord, I am seeking 15 days time to rejoinder. कब आया था रिटर्न? Reply was filed But on lord, first time, 14/9/2024. अरे फर्स्ट टाइम नहीं, आपका रिटर्न कब आया था ये बताइए? 24 written 18 में आया था. इसमें तो रिटर्न लगा ही नहीं है हमारे पास तो. रिटर्न देखो कब आया था? 24/9/18. 24/9/18. तो 6 साल बाद टाइम थोड़ा ना मिलता है वकील साहब रिजॉइंडर के लिए. क्या मैटर क्या है बताइएगा? आप ही लोग बाहर जाके गाना गाते हैं कि हाईकोर्ट काम नहीं करता. हाँ ठीक है, बस मेरिट्स पे बताइएगा. और तैयार नहीं है तो एडमिट करके डाल देते हैं, फाइनल हियरिंग में आएगा 8-10 साल बाद. लंच के बाद बताइएगा, पढ़ लीजिएगा, लंच के बाद बताइएगा. 116 नंबर ऑफ इंसिडेंट केस मॉर्निंग में रिक्वेस्ट नहीं कर पाया उसको. कोई बात लास्ट नहीं, 116 लिख लीजिएगा. चलिए. अब लंच के बाद पास